So good morning, everyone. Before you people join, probably people who joined at 8:30, we just discussed some of the basic problem. And good thing was that, like whatever algorithms are taught, actually I was expecting that a lot of people will ask me to repeat it once again. But look like people had taken enough of efforts, and people who joined, even they were not having any problem with hardly like one or two, you can say silly mistakes into the code. So I helped them to rectify it. The people who didn't join, I'm very sure they have already done it well, and they really do not want to get bored with the same old linked list once again, and that is the reason that they didn't join. So today, obviously, there were like one or two questions regarding doubly circular linked list, and I thought that I'll take it common for everyone. So I just postpone those questions. So we will have a very quick look at like making a doubly circular linked list. We will discuss that. I'll not talk about like all functions. I'll talk about like one or two functions from the doubly circular linked list. We will see how the things are going, and after that, the typical questions like I want to reverse a linked list, or I want to reverse a linked list using recursion. Now these are the kind of a typical tricky interview questions are there. So few people have already posted that, and don't worry, we will talk about them as well, and then we will move on to the stack and queue. That is what our agenda for today. I hope with your kind what is that? With your kind permission, I should be starting with the session. Should we? Yeah, great. So the very first thing, as I said, that we will quickly talk about the doubly circular list. And doubly circular list, I told you already that the program will be always a kind of a combination of a doubly linked list and a kind of a circular linked list. So few tricks from doubly we need to recall, few tricks from the circular we need to recall, and then mainly wherever you need to traverse till the last node, I said never jump onto the last node, always go one step behind, always go like one step. You can simply say head dot previous, and head dot previous is nothing but the last node. So your traversal time is saved, and obviously that is have a direct impact on your time complexity. मैंने आपको सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपरली दिखाया था, बचे हुए लिंक लिस्ट का मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाया था. हर एक नोड का एडिशन और डिलीशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रीजन वाज वेरी क्लियर, रीजन वाज वेरी क्लियर. बिकॉज अगर आपको पहला वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया था, तो बचे हुए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप लोग खुद से भी कर सकते हो. और लिंक लिस्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है, सो दैट एवरीवन नोज. तो लेट अस जस्ट गो अहेड. तो doubly circular linked list, I say that the time complexity of add first or even add last is O of 1, because the no traversal is needed. Let me quickly draw the linked list. Draw the linked list. We have like a head pointer. The head pointer is pointing to the node 10. Let's say it is pointing to the 20. This is pointing to 30, and this is pointing to 40, and last node is pointing to this. But sir, this is circular linked list. Oh, the 20's previous is 10, 30's previous is 20, 40's previous is this, and then 10's previous is 40, and this is nothing but my doubly circular linked list. Oh, that is great. Now what I need to do? What I need to do? I want to add a new node at the end of the linked list. If you want to add a node at the end of the linked list, go ahead, make it 50, a new node over here. You understand it very well. जब जब डबली लिंक लिस्ट में हम लोग एडिशन करते हैं, तब तब चार पॉइंटर मॉडिफाई करने पड़ते हैं. एक तो न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का प्रीवियस, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का प्रीवियस, एंड एट द सेम टाइम जो जो जिन दो नोड के बीच में आपको ऐड करना है, उनका भी नेक्स्ट और प्रीवियस आपको मॉडिफाई करना पड़ता है. सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन डू इज दैट, मेरे पास हेड है, हेड मेरे को मिल रहा है. लेट मी ऑल्सो टेक अ पॉइंटर टू द लास्ट नोड. आई कैन सिंपली से दैट दिस अ पॉइंटर, लेट्स से टेल. तो अलग से पॉइंटर लेने के लिए कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली से टेल इज नथिंग बट इक्वल टू हेड डॉट प्रीवियस. अलग से पॉइंटर मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है. आई एम सेइंग दैट there is no need to even maintain a pointer. I just say that tail is equal to head dot previous. And if you have done that, now there are like a 4 lines of code. Which 4 lines of code? New node. If from the new node I want to go to the previous, see the pointers to be changed. New node की previous में कौन आना चाहिए? और new node के previous में tail आना चाहिए. I understand that. New node के next में कौन आना चाहिए?
और न्यू नोड के नेक्स्ट में आपका हेड आना चाहिए। ओके, आई सी दैट एज वेल। तो जो नए वाले नोड थे उसके लिंक पहले बना लो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, द टेल्स नेक्स्ट should be new node, tails next should be new node, that we need to take care. And last one, the heads previous, the heads previous should also point to the new node, heads previous should also point to the previous, that is like extra that you need to do it, and nothing else. That's it, that is more than sufficient. So I'm saying that it should be around 5 lines of code, not more than that. So which 5 lines of code? I'll try to write it over here. Obviously I'm talking about general case over there. Tail tail is equal to heads previous. So that is probably the very first part of the code that we have done. What is second line? This is like a first part of a code. What is second line? The second line, it was saying I want to change the pointers of new node. So new node dot next is equal to head. New node dot next is equal to head. So like a second part. The third part, I was saying new nodes previous is equal to this. Go ahead and you simply say new nodes previous is equal to tail. We have handled that. Now what is left? Or two more lines are left. एक तो tail का next और head का previous. Go ahead. You say there's like a fourth line. I'm saying it should be the new nodes. Sorry, not new nodes. Tails next is equal to new node. That is also done. And last line, what last line? That is about heads previous. So go ahead and put that heads previous is also equal to new node. So 1 2 3 4 5, it is there. Namrata is saying that do we really need a tail? नहीं, हम लोग टेल पॉइंटर अलग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं. आई एम सेइंग दैट टेल इज अ लोकल पॉइंटर दैट आई एम क्रिएटिंग ओवर देयर. जस्ट अभी आप लोग टेल की जगह पे उसको ट्रायो नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन जयदीप, अंडरस्टैंड दैट मैं हेड और टेल नहीं कर रहा हूँ. रादर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग कभी भी टेल पॉइंटर लेते ही नहीं है. क्यों नहीं लेते? वैसे भी आपके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस है ना. सो देयर इज नो नीड दैट यू मेंटेन अ टेल पॉइंटर सेपरेटली. इट डजंट मेक एनी सेंस. सो दिस इज प्रोबेबली योर जनरल केस. एंड व्हाट कुड बी द स्पेशल केस? Yes, the special case is to be considered still. Your special case where you can say that the head is null. If the head is null, whatever new node that you are going to create it, whatever new node that you are going to create it at some address, whatever it is, I don't bother. So what I need to do, I want the head to point to that particular node. This is one thing. And I want to make that particular node as a circular. Means new nodes next and previous, they should point to itself. So that is the extra thing that we need to take care. The extra thing that we need to take care, I can simply say, what is to be done? In this particular case, it is hardly I need to say head is equal to new node. I can simply say new nodes next is equal to head and new nodes previous also equal to head. आप लोग हेड की जगह पे सीधा न्यू नोड भी लिख सकते हो. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो ट्रबल विद दिस. हाँ रुको, पिछले इसका मैं स्टेप, लास्ट स्टेप वापस से रिपीट कर रहा हूँ. द लास्ट स्टेप, जानवी प्लीज पे अटेंशन. द लास्ट स्टेप, इट इज सेइंग दैट you want to take heads previous pointing to the new node. Heads previous you want to pointing to the new node so that it will be added at the end. Correct, no? हम लोग जब डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं, डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप लोग नोड एट द एंड ऐड कर रहे हो तो हेड का प्रीवियस शुड पॉइंट टू द लास्ट नोड. एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. हेड डॉट previous is equal to new node. Nothing extra is to be done. So this is a kind of a code that we typically write when it come down to the idlers kind of functionality. Now you ask the question, so what code I need to write it for the add first functionality? To be frank, for the add first functionality, अब ये जो भी code था, I'll write it over here. It was like a add last code. It was like a add last code. What about add first code? For add first code, there is no extra efforts needed. आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट का ट्रिक आपको ऑलरेडी पता है. सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऑलरेडी हम लोग ने किया था. द सिमिलर ट्रिक get applied over here. So at first, what all we need to do is that keep everything same. Just do one thing. After that, just take your head, move your head to the next. What is that? That first node.
yes, that one extra line is needed and nothing extra is required. So I'm saying that after that I want the head to be pointing to this particular new node, head to be pointing to this particular node, so that my linked list is not starting with 10 but linked list is starting with the 50. So I'm saying that extra one line, the line number 6 that you need extra for this block code is nothing but head is equal to new node, rest entire code remains same, remains same. And anyone who didn't understand this trick, I'm not going to explain once again. You should go back and you should work on a what is that, singly circular linked list पेपर वर्क. सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के पेपर वर्क में ऑलरेडी ये ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एड लास्ट और एड फर्स्ट दोनों का कोड सेम ही रहता है. एम आई करेक्ट? सिर्फ एक हेड मॉडिफिकेशन, दैट इज एक्स्ट्रा थिंग. तो ऐसा कुछ नहीं सर डब्ल्यू सर्कुलर में कुछ तो नया हो रहा है. बिल्कुल नया नहीं हो रहा है. यही चीज आपकी सर्कुलर लीनियर और सॉरी सर्कुलर सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी यही ट्रिक प्ले किया गया था. तो आई एम सेइंग दैट द सेम कोड इट इज गोइंग टू वर्क एज ऐड फर्स्ट. एंड इफ यू पीपल हैव रिटर्न this code over there at first and at last, I really don't think there is any problem that you are not able to deal with the linked list. It should work, it should work. And probably what about display method? The display method that can be also managed. Again जैसे circular linked list को हम लोग do while से display करते हैं, on the parallel line इसको भी हम लोग do while से display कर सकते हैं. That is absolutely doable. So you go ahead. We have got like a head pointer pointing to this, let's say 10, pointer to let's say 20, let's say 30, let's say 40, and it's pointing at the start. This is pointing at the end. Okay, this is done. How do you display in a forward order? How we can display in a forward order? We can start with the trav is equal to head. If we can start with the trav is equal to head, and then I want to print each one. Print trav dot data and take trav to the next node. So trav is equal to trav's next. A trav is equal to trav's next. Trav is equal to trav's next, and you continue all the way with this. That's it. Nothing much to be done. Now wait. ये कब तक repeat करना है? So you always want that if this part I want to print it, no doubt. I want to repeat it once again. I want to print this as well. Travis equal to travel dot next. I want to print this as well. Okay, that is also right. And I want to print this as well. So after printing all this, then I want to stop. After printing all this, then I want to stop. You just go ahead and the similar condition that you had written earlier, do while trav is not equal to head. This is again, go back, check your singly circular linked list, exactly same code we have written. यहाँ पर null नहीं है, ये circular linked list है. Since it is circular linked list, we have to follow the similar trick over there. Nothing much. So what about doubly linked list then? Sorry, what about reverse display? Reverse display, you need to start a reverse display. You cannot start from here. Reverse display, you need to start from here. So you want trav to be taken over here. Yeah, how do I take trav over here? अब आपको doubly linked list आपको याद होगा. Doubly linked list में we just started from the first node, we reached till the last node, and then we started traversing in a reverse order. Now in this particular case, I can directly jump. So good thing is that now I can directly jump where I can simply say trav is equal to head dot previous. A trav is equal to head dot previous. We can begin from there. Okay, that is great. We can begin from there, and then you can again follow something similar technique. Something similar technique. You want to display all the nodes again and again. आपको ये बार बार वापस से डिस्प्ले करना है. So I'll again continue with something called a do while loop while trav is not equal to head dot previous. वापस से जब तक मैं previous के ऊपर नहीं आ जाता तब तक printf or print system dot println, whatever you said, like a trav dot data that you can print, and then you can go to the previous function, previous node. Trav is equal to trav dot previous. Now all that much you need to do it, nothing extra you need to continue, isn't it? That's it. So this is nothing but your doubly circular linked list. So यहाँ पर अच्छी बात है, let it be add first, let it be add last, let it be del first, let it be del last. In all the cases, the time complexity remains O of 1. Time complexity remains O of 1.
I was talking about doubly circular list, and we were talking about two display functions. One of the display function was, let's say, forward display, and another function, let's say, reverse display. My question to you, do you want me to type this code and run it, or you will try it by yourself? So you can do that. Okay, that is good. So that we will not waste time. Obviously the code is available with you. I have already written it for you. So go ahead, you can do it. Ideally it was expected that कि आप लोगों ने already कर लिया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, या फिर सर हमने किया लेकिन सर वी स्टक विद द प्रॉब्लम, या फिर हमारे कुछ तो एरर आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, then please go ahead and do it. One more thing, one more thing, probably डबली सर्कल लिंक लिस्ट आप डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट ये आप लोग कर लो, डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट अब ये आप लोग कर लो. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट वंस अगेन, just to this is a bit interesting, that is the reason I'm just writing it over here. Doubly circular linked list, I just want bit on a time complexities. I want to talk about time complexities. Again, for your exam point of view, you can definitely visualize them. And if there is a question that you should be able to answer, the first one, what about like a add first? What is the time complexity of add first in doubly circular linked list? No loop is involved. Just now we have written. So it would be, let's say, O of 1. What about add last? Add last, again, you continue with the O of 1. Okay, that is simply great. You continue like a third one. The third one, you say like a del first. In a del first, in a del first, again, you need not to traverse. It will be still O of 1. And what about delete last? Delete last, it will be still O of 1. What about display? The display, or you can say traversing, the traversing, you need to traverse. आप लोग forward करो या reverse करो, कैसे भी करो, you have to traverse throughout the list. So it will be O of n, no doubt on that. And then you can have, let's say, or delete add or delete at position, add or delete at position. So again it will be O of position, और अगर आप लोग position के point of view नहीं बात करना चाहते हो, then I can say that it is O of n. So it is up to you how, in which unit that you want to discuss. One more, what about find element? What is the time complexity of finding an element? If you want to find element, obviously you need to go through all the element till the last element, and then you need to check it. So it is ultimately it is a linear search. You understand that जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, so finding element, it is nothing but linear search, because you are trying to access all the elements one after another, nothing else. Amit is asking that atlas cannot be O of n. No, it cannot be. If you are written it cannot be का मतलब है, अब आप लोग कैसे लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. So ultimately you want to traverse till the last node, and to traversing till last node, it is hardly one line of code is involved, isn't it? So जब हम लोग डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम लोग डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, डबली लीनियर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम इट इज ओ ऑफ एन, क्योंकि हमको पहले ट्रैवर्स करना पड़ता है टिल लास्ट नोड. लेकिन यहाँ पर देयर इज नो ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड. फिक्स 5 लाइन्स ऑफ कोड will always execute irrespective of how many number of elements are there into the list. हाँ, अगर आपने कोड लिखना नहीं, से मैंने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को गंदा वाला ही कोड लिखना है, मुझको ट्रैवर्स करना ही है, इन दैट केस इट कैन बी ऑफ एन, बट डजंट मेक एनी सेंस. आई होप अमित यू गॉट द पॉइंट. अगर आपने ट्रैवर्सिंग का कोड ऐड किया है देन इट विल बिकम ओ ऑफ एन, लेकिन आइडियली यू शुड नॉट हैव एडेड द कोड ऑफ अ ट्रैवर्सिंग, राइट? सो इट इज देयर. चलो, एनीथिंग एल्स? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, एप्लीकेशंस बता रहा था. डब्ल्यू सर्कल लिंक लिस्ट सर कहाँ पर यूज होता है? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, नाउ सिंस आई टीच टू द एम्बेडेड कोर्सेस, आई टीच देम डिवाइस ड्राइवर्स. So luckily I know this, and since I know this, just bit interesting. Linux kernel, लिनक्स कर्नेल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल के अंदर की बात कर रहा हूं. लिनक्स कर्नेल, यू फाइंड दैट ऑल लिंक लिस्ट आर doubly circular linked list. Linux kernel,
or linked list are doubly circular linked list. So whichever linked list that you talk about, all are doubly circular linked list. So can you give some examples? Yes, one of the example, what do you call it as a job queue. अगर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, सो जॉब क्यू या फिर यू कॉल इट एज प्रोसेस टेबल, जिसको आप लोग कहते हो, दैट इज बेसिकली स्टोर्ड एज अ डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अनदर, आपने अगर कभी बेसिकली रेडी क्यू सुना होगा, द रेडी क्यू itself is kind of a doubly circular linked list inside Linux kernel. You talk about like a waiting queue. अगर आप लोगों ने कभी वेटिंग क्यू सुना होगा, लिनक्स ये सब कुछ शेड्यूलिंग में आता है, ओएस के शेड्यूलिंग में आता है. सो इट इज अगेन अ डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट. मैं ओएस की बात कर रहा हूँ, मैं लिनक्स कर्नल की बात कर रहा हूँ. नॉट ओनली दैट, इफ यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड अ मैसेज क्यू, आईपीसी मैकेनिज्म, द मैसेज क्यू, जो लिनक्स के अंदर जो मैसेज क्यू क्रिएट होता है इनसाइड द कर्नेल, इवन दैट इज डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द एग्जांपल्स कि ये कहां पर यूज होता है. इन प्रोबेबली देयर इज समथिंग कॉल्ड आइनोड टेबल और देयर इज समथिंग आइनोड कैशे. मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे लिंक लिस्ट जो उन्होंने वहां पर बनाए हुए हैं, all those linked lists are basically the doubly circular linked lists. They are all doubly circular linked lists. And what is the reason? Probably primary reason is that ये जो आपके basic operations है, they are working with like a O1 time complexity. And obviously that is people always want to look for. Obviously, this Linux kernel linked list is bit tricky also. It is written purely in C language. So I will not go into the tricks of it, but I will just tell you the generalized application over there and how these are written, how these are considered, and where they are actually used. So people always ask me that, sir, ये double circular linked list use कौन करता है? It is so complicated. It is so complicated. आपको जिंदगी में वैसे उसको एक ही बार लिखना होता है, आपको बार बार यूज करना होता है. So using wise, it is very easy. There is absolutely no trouble with that. And Linux kernel is using it very heavily, I said. With this, I guess we had like a enough of discussion onto the basic linked list, the foundation linked list, and now it's time to move on and to talk about the linked list, kind of some interview questions. I may not take like each and every interview question. It depends, but yes, few common questions we will definitely discuss. Madhuri is asking the question, what is inode table? जो आपके फाइल्स होते हैं, फाइल्स की इंफॉर्मेशन, जब लोग फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हो, प्रॉपर्टीज में जो जो आपको इंफॉर्मेशन दिखती है, वो कर्नल के अंदर एक स्ट्रक्चर में रखी जाती है. उसको कहा जाता है आइनोड. उसको कहा जाता है आइनोड. उसको गैल्विन की बुक में उसको कहा गया है फाइल कंट्रोल ब्लॉक. जैसे प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वैसे फाइल का होता है फाइल कंट्रोल ब्लॉक. एंड देन इन दैट फाइल कंट्रोल ब्लॉक, इन दैट पर्टिकुलर फाइल कंट्रोल ब्लॉक और आइनोड, इसको जब मेमोरी में लोड करते हैं, तो मेमोरी में यू नीड टू मैनेज इट एज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. करेक्ट. सो वो जो टेबल है, दैट टेबल इज कॉल्ड एज आइनोड टेबल. आई होप माधुरी यू गॉट द डिटेल्स व्हाट इज आइनोड टेबल. एनीवे, जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, तो आई एम वेरी श्योर ये कहीं ना कहीं पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिस्कशन आएगा ओएस के मॉड्यूल में, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट. एनीवे, not a big deal. We are continuing further, and what we are saying is that we want to sort the singly linked list. Okay, you want to sort the singly linked list. So how we can sort a singly linked list? Is it complicated? No, not at all. The easiest algorithm to deal with this, I believe, is either you can go with like a selection sort, or you can go for the bubble sort. Choice is yours. I said you can make it like a selection sort, or you can make it bubble sort. मैं सारे कोड लिखने वाला नहीं हूँ, कुछ कुछ ट्रिकी कोड रहेंगे उतने हम लोग लिखेंगे. बचे हुए कोड आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू. पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन, नहीं सर हमको इंटरव्यू प्रिपरेशन वी आर टेकिंग वेरी सीरियसली, सो पीपल हु आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, दे शुड गो अहेड, टाइप दैट कोड. सो विल इट वर्क? डोंट वरी, इट विल वर्क, दैट इज माय गारंटी. आप उसकी चिंता मत करो. सो गोइंग अहेड, लेट्स से हेड 10, 20, 30. अरे सॉरी, हमको सॉर्टिंग करना है ना. सॉर्टिंग करना है, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड ही लेंगे तो फिर 10, 20, 30 हम लोग करेंगे क्या इसके अंदर? लेट्स से 5, लेट्स से 6, लेट्स से 4, लेट्स से 3, लेट्स से 1, समथिंग लाइक दिस. So this is kind of a linked list that I have got. If this is linked list that I have got, and then I want to apply the selection sort. ये selection sort आपको array के लिए आता है? You recall the selection sort for arrays? Yes. So एक काम करते हैं,
वी विल क्विकली गो अहेड और एरे का सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिखते हैं और बाद में देखते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट इट फॉर अ लिंक लिस्ट. सो सिलेक्शन सॉर्ट आई एम ट्राइंग टू राइट इट. सिलेक्शन सॉर्ट आई एम ट्राइंग टू राइट इट फॉर द एरे. मैं पेपर वर्क पूरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम करके नहीं दिखाने वाला हूँ कि पहले पास में क्या हुआ, दूसरे पास में क्या हुआ. वो ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट में पढ़ लिया है. लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट हाउ द कोड वाज रिटन. द कोड वाज रिटन समथिंग लाइक दिस. फॉर I is equal to 0, I was less than n or n minus 1, you can say I plus plus. Just give me a minute. I'll try to write it once again. So I is equal to 0, I is less than n, okay, and you're saying I plus plus, done. You continue further. You write the next logic for j is equal to I plus 1. I hope I'm correct. So j is less than n, okay, that is also all right. And again I'm saying j plus plus, okay, that is also all right. And within this you have checked somewhere if a of I is greater than a of j. What do you need to do? I need to simply swap a of I and a of j. Do you recall this basic logic? ये लॉजिक आपको याद है सिलेक्शन सॉर्ट का? This is very simple logic, straightforward logic. You remember this. Let us go ahead. This is not bubble sort Vishal Singh. This is a selection sort. बबल सॉर्ट वाला वो विशाल अगला वाला लॉजिक था अपना बबल सॉर्ट का, जहां पर j और j+1 हम लोग कंपेयर कर रहे थे. आई यू रिकॉल बबल सॉर्ट मतलब जहां पर हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव एलिमेंट जहां पर हम लोग कंपेयर करते हैं, दैट इज रेफर्ड एज अ बबल सॉर्ट. a of j is greater than a of j+1 and then we are trying to swap a of j and a of j+1. I hope you recall that. That was bubble sort. आप चाहो तो वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. That is absolutely possible. चलो आई एम जस्ट गोइंग अहेड. आई एम गोइंग अहेड. मुझको यहाँ पर क्या करना है? What are the changes that I need to focus on? Please pay attention. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? We are just going through the number of elements over here. Have a look at this. Instead of I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. See the changes. I is equal to head. I is not equal to null. I is equal to I arrow next. नहीं, not arrow. हम लोग जावा में I is equal to I dot next. That's it. So I guess you have replaced with the similar one. Let us continue further. J is equal to I plus 1 मतलब I के आगे वाला element. J you are going till last element and again you are saying J plus plus. So I के आगे वाला element I dot next. J is again not equal to null. You are trying to go to the last element and J is equal to J dot next. J dot next. अगर आपके पास सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट का कोड है ऑलरेडी, अगर आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी ओपन किया है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो देयर, एक सॉर्ट का फंक्शन उसके अंदर ऐड कर सकते हो और क्विकली चेक करके भी देख सकते हो कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. अब एरर ऑफ आई नहीं, हमें आई का ith एलिमेंट हमें कंपेयर करना है. और हाउ डू यू कंपेयर ith एलिमेंट? आई सिंपली से दैट आई का डेटा और जे का डेटा. सो आई डॉट डेटा and j dot data you want to compare. Okay, that is good. And if you are comparing, then if it is mismatching, then you want to swap that as well. Okay, I'll go ahead and to swap the ith data with jth data. हम लोग पॉइंटर्स को टच नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका डेटा और उसका डेटा स्वैप कर रहे हैं. दैट्स इट. हम लोग पूरा का पूरा नोड स्वैप नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ नोड के अंदर का डेटा स्वैप कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस है. I and J, they are declared as kind of a node pointers or node references, that you understand it very well. खत्म हो गया. The selection sort is done. And this is absolutely possible to implement the selection sort with the singly linear linked list. There is no trouble with this. There is no trouble with this. So can we also implement bubble sort? Yes, to be frank, even bubble sort is also not a problem. But insertion sort, there is a problem. You may not implement the insertion sort there. Why it is so? Because insertion sort, we say that you take one element and you want to compare with all elements previous to that. अब उल्टा जाने का रास्ता नहीं होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. उल्टा जाने का रास्ता नहीं होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है when it come down to the singly linear linked list. And that is the reason I'm saying that we may not want to go there, right? Yeah.
Is this clear to everyone? Is selection sort is okay? And you understand that how easy, अगर आपको basic selection sort आता है, अगर आपको array के साथ अच्छे से आता है, तो you can very well convert it to the linked list. There is no problem at all. Let's take a first question. As I said that, योगेश इज सेइंग दैट व्हाई नॉट इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट का जो लॉजिक था, योगेश यू कैन ट्राई टू रिकॉल, इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या था? वी सिलेक्ट ith एलिमेंट, हम लोग पहले दो का एरे कंसिडर करते थे और फिर उसके साथ हम लोग बचे हुए सारे प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे, फिर हम लोग तीन का एरे कंसिडर करते थे, फिर बचे हुए प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे, फिर हम लोग चार का एरे कंसिडर करते थे और बचे हुए सारे प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग एक एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, हाउ डू यू गो रिवर्स, हाउ डू यू कंपेयर विद द रिवर्स, करेक्ट? क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट है ये सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट है। सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट से हम लोग पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे हम लोग आराम से जा सकते हैं, बट गोइंग रिवर्स देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज द रीजन implementing insertion sort is not straightforward, then it is quite tricky. I hope Yogesh you got the point, right? No problem. See, feel free to let me know if any other doubts are there, any questions are there. हाँ, अक्षय is saying that ये आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस क्यों डाल रहे हो यार? प्लीज गो अहेड, पुट इट पब्लिक, आई डोंट माइंड, इट्स ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली नीलेश सर किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट। सो व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट। ही इज ट्राइंग टू टेल मी दैट यहाँ पर हम लोग आई इज लेस देन n-1 कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर i is less than n-1 कर रहे थे। So to be frank, if you are at all looking for that, if you are at all looking for that, that is also possible. To be frank, even this code works, don't worry. But if you looking for optimization, sir एक चीज extra हो रही है, you can always replace it with I dot next. I dot next is not equal to null, so that ऊपर के इसमें एक iteration कम हो जाएगा। I hope Akshay you got the point. Can you do that change? If at all you are worrying about one more iteration that is happening over there. So I is less than n-1 है, तो n-1 है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? I dot next is not equal to null कर सकते हैं, so that we reach to the maximum second last node. So that is absolutely fine. Even this will work. Even this will work. You don't worry about it. आप लोग दोनों करके देखना। किसी को और कुछ पूछना है सिलेक्शन सॉर्ट में? So sorting of a linked list is very easy if you know the sorting of arrays also. Let us move further and we talk about the another one where we want to reverse a single linked list. Now reversing a single linked list is the very commonly asked kind of questions. I was there nearby and then someone was आप लोगों का बीच में कुछ open house discussion हुए थे. I was part of that. Even though I was silent, I was just listening what things are going on. And yes, people were worried, sir, what kind of questions are typically asked in like interviews? The typically what kind of questions are asked in interview? They are something like this. Now these are the typical interview questions that they ask you, okay, you reverse the linked list. So reverse the linked list or data structure question or write the sorting algorithm, write the searching algorithm. I'm talking about in interview. उसके पहले coding round होता है वो बात अलग है. I'm talking about in interview what kind of questions are there? The questions are in front of you. तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो सर हमें क्या करना होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू कोड देयर। आजकल मैंने इंटरव्यू का ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है, आई हैव सीन लाइक मेनी ऑफ द प्लेसेस। अब जो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, जो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं तो सर वहां पर हम लोग पेपर पेन वगैरह होता है? टू बी फ्रैंक होता है, वहां पर पेपर पेन भी होता है, इट इज अलाउड बिकॉज द इंटरव्यूअर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज आस्किंग यू, यू प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। इंटरव्यूअर का कैमरा यूजुअली ऑन होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, लेकिन आपका कैमरा ऑन करना कंपलसरी होता है। एंड देन नाउ यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू गो अहेड एंड एक्सप्लेन हिम कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो सर हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यू कैन ओपन अ पेन ब्रश, यू कैन ड्रॉ इनसाइड दैट, यू कैन ओपन। वैसे अगर आपको पता है जूम के अंदर भी एक ऑप्शन होता है इनसाइड जूम
there is like a sharing, screen sharing option is available. तो वहां पर whiteboard option is there. So many of these tools are there. Let it be, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके सारे इंटरव्यू जूम के ऊपर होंगे, कुछ इंटरव्यू जूम के ऊपर होंगे, कुछ इंटरव्यूज आपके व्हाट इज दैट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर होंगे, कुछ प्रोबेबली स्काइप के ऊपर होंगे, कुछ प्रोबेबली और किसी जगह पे होंगे. इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. By any means, when you have got some sort of an interview scheduled over there, some kind of sort of an interview scheduled over there, at that time you should be knowing how effectively you can communicate from your laptop. So there are likely chances are that they will be asking you, okay, now you explain me the atlas function. So atlas function, you're not, you can always open a notepad and you can type it into that, but notepad में बोलो type कर सकते हो. What about drawing diagram? So I always suggest that you can have your own tools, effective tools available online, and where you can draw in front of him and you can show it. You know, it is always easy to pass on the comment, sir वो teachers को बताना बहुत आसान होता है, sir you are not drawing it good. You know, it is okay. टीचर को आप लोग बता सकते हो. When it come down to you, you realize अच्छा यार ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कितने एफर्ट्स लेने पड़ते हैं इन ऑनलाइन मोड, लेकिन आपको ये एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. Now whichever tool that you like, आप पेन ब्रश में ड्रॉ करना चाहते हो, ड्रॉ इट इन पेन ब्रश. यू वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ द लाइक, आपके पास और कोई ऑप्शन है, यू ड्रॉ इनटू दैट. You want to use like a zoom, what is that, zoom या कोई whiteboard kind of software is there, you want to use that. You want to go with like a Google Jamboard or like any other whiteboard software, liveboard options are available, go with that, whatever. But you cannot start doing it on a interview day. अगर किसी को लगता है, हाँ, वन नोट इज ऑल्सो देयर. अगर किसी को लगता है नहीं यार इट इज वेरी इजी, प्लीज प्रैक्टिस इट नाउ. डू नॉट रियली वेट, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे एंड यू स्टार्ट डूइंग इट एट दैट टाइम, इट विल बी टू लेट. और तब आपको पहली बार पता चलेगा यार ये यू नो इट इज वेरी इजी टू पास ऑन द कमेंट्स, बट व्हेन यू ट्राई टू डू इट हालत खराब हो जाता है कि ये ऐसे. और ऊपर से वो इंटरव्यू का प्रेशर अलग से, वो सामने वाला आपको देख भी रहा है एंड देन यू आर ड्रॉइंग एंड यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ, एंड देन यू आर सेइंग दैट ओ व्हाट इज द प्रॉब्लम. ही इज आस्किंग यू दैट, अब सामने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कंसेप्ट ठीक से नहीं आ रहा है या आपको ड्राइंग ठीक से नहीं आ रहा है. आई होप यू विजुअलाइज, करेक्ट. सो दिस विल द प्रॉब्लम्स. तो सर हम लोग पेपर पेन नहीं यूज कर सकते क्या? To be frank, now it depends on an interviewer. I have seen that even people are using paper pen. तो फिर वो आपको पेपर पेन उसके सामने ऐसे लेके दिखाना पड़ता है, ये रहा पेपर पेन एंड देन आई एम ड्राइंग लाइक दिस एंड आई एम डूइंग लाइक दिस, एंड दैट बिकम्स नॉट सो इजी एक्चुअली. एंड यू नो एट द सेम टाइम, बाय द टाइम यू आर ड्राइंग यू शुड टॉक. ऐसा नहीं है कि 2 मिनट रुको, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ. दैट यू विल अगेन लूज योर इंप्रेशन, दैट अगेन यू विल लूज योर इंप्रेशन. तो लिंक लिस्ट आना ये एक अलग चीज है, डेटा स्ट्रक्चर आना ये अलग चीज है, और डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने आना, दैट इन प्रोबेबली इन इंटरव्यू केबिन हाउ डू यू टॉक इवन फॉर अ सिंपल सिंगल फंक्शन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, वो तो छोड़ दो. रिवर्सिंग लिंक लिस्ट इज लाइक यू नो मच अहेड. जो बेसिक एड फर्स्ट और एडलास का लॉजिक है आपको आता है, आपको समझ में आता है, यू आर एबल टू राइट द कोड, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू समवन. आपको याद होगा मैं आपको पहले दिन पे बता रहा था, बेटर यू सिट इन टीम्स, सो दैट एज यू सिट इन टीम्स, as you discuss in teams, you realize your limitations. Early you realize your limitation, you can start exploring the possibilities immediately. And it is not only for data structure interview, the all interviews you have to have the kind of a presentation skills, and these presentation skills unfortunately cannot be built within a day or two. So 2 दिन में आपको ऐसा नहीं पता चला, you schedule for your first company and you spoiled your interview just because of the presentation, and then अचानक से लोग जग गए, यार सर आज का मेरे को सब कुछ आ रहा था बट मैं उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा था. एंड सर वो ऑनलाइन का लिमिटेशन है, वो ऑनलाइन का लिमिटेशन नहीं है. सो आपको पहले से पता है कि ऑनलाइन है, तो ऑलरेडी यू पीपल हैव स्पेंड मोर देन 2 months. तो सितंबर रादर, सॉरी वी स्टार्टेड इन सितंबर, October, November, December. Okay, we spent 4 months online, so you should have come up with this, and you still have time. You still have time, but you cannot say at that time. So since it was online, I could not make it out. Better start early. Better start early. Practice with over there. That makes you comfortable. It is not a big deal. चलो getting back. तो मैं आपको बता रहा था कि what kind of questions will be there. So there are quite good chances the question will be simple, but the presentations you need to practice from now.
when it comes down to the coding interviews, so will there be coding interviews? Yes, there will be coding interviews as well. And वैसे to be frank, it is not started with online. We have seen that last three, almost 3 years you can talk about. Last 3 years, I'm checking that the many of the companies are arranging the coding rounds. सो इवन दो जब कॉमन कैंपस होता था ऑफलाइन मोड में, स्टिल पहले कुछ दिनों के लिए कंपनीज आर सेइंग दैट नहीं नहीं, वी वांट ऑल स्टूडेंट्स एंड वी वांट देम ऑन देयर कंप्यूटर एंड वी वांट दैट दे शुड बी गिविंग एग्जाम. तो हम लोग हमारे सेंटर में अरेंज करवाते थे एग्जाम्स कि चलो आ जाओ, जितने लोग शॉर्टलिस्ट हो गए और उनको एग्जाम दिलाओ. तो एग्जाम में क्या होता था, एग्जाम में थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड होता था, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव, सो उसके क्वेश्चन होते थे. Many times there are questions onto the operating system fundamentals or like Java or C++, depends. कुछ it company के ऊपर डिपेंड होता था. The company gives you the choice. कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी थी कि आप लोग चूज करो कि आपको एमसीक्यू कौन से टेक्निकल में देने. सो जावा का चाहिए, सी प्लस प्लस का चाहिए, सी शार्प का चाहिए, यू चूज इट. Some companies they said that no, no, we will not give you any choice. We will directly say that these are the MCQs that you need to solve it. So aptitude plus we call them as a technical aptitude. टेक्निकल एप्टी, इट इज अ टिपिकल एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस होते थे. once you clear that round once you clear that round, probably usually the coding round is scheduled, and a coding round you are like expected. तो सर वो कैसे काम करता था, जैसे आजकल आप लोग हैकर अर्थ के ऊपर काम कर रहे हो, on the similar line the things are going there. On the similar line the things are going there, so you need to again check with that. Again the question might be the like very simple questions as well. So some of the time question as simple as कि 2D array allocate करके दिखाओ, और 2D array का कोई तो 2D array का मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम करो. It could be like as simple as that, or it could be really tricky ones, and you can always go ahead. There are a lot of platforms are available. CodeChef is there, HackerRank is there, HackerEarth is there, and they provide lot of competitive programming questions over there. As you get time, solving 1-2 question from there, even from the easy category, I always suggest, recommend कि आप लोगों ने वो कर लेना चाहिए. So जैसे आप लोग कहते हो कि like aptitude you should be like in a regular touch, I always believe कि even this kind of questions you should be regular touch. So why it is so? Again, it is not like just to improve your programming abilities. It is not only about programming abilities. It is also about using that way. वो जो टेस्ट केसेस क्लियर नहीं होते हैं और वो जो इश्यूज होते हैं, सर वो मैं कोड तो लिखता हूँ, मेरा कोड चल भी जाता है, 2 टेस्ट केसेस वर्क होते हैं और बचे हुए 4 वर्क नहीं होते. इट ओनली मीन्स दैट you are able to deal with the general cases. You are not able to deal with the corner cases. You are not able to deal with the special cases. और यही चीज मैं आपको लिंक लिस्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि पहले हमेशा जनरल केस के बारे में सोचो, यू राइट दैट, एंड देन यू ट्राई टू इमेजिन कि इसमें स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं. सो अगर आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है, देयर लाइकली चांसेस आर दैट सम ऑफ द कॉर्नर केसेस, some of the special cases that you are not able to visualize कि what kind of input can be given, right? So now you need to start. और ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर ये फॉर्मूला और ये ले लो. I have seen not last batch, even last to last batch, not even last batch तो उनका आधा प्लेसमेंट ऑनलाइन में हुआ, even उसके पहले बैच. So where the companies were scheduled them for this kind of test, and trust me, many of our students were not able to crack it on like a first company. And why it is so? Not because the program was very difficult. The problem was that the entire environment is new to them. The entire proctored platform were new to them. Many of them could not start their webcam. So webcam ही चालू नहीं हो रहा है और एग्जाम आगे ही नहीं बढ़ रहा है. And then जो एग्जाम के लिए टाइम दिया था, डेडलाइन दिया था, the deadline was over. And then people say that सर वो ऐसे कर रहा है, कंपनी ऐसी एग्जाम ले रही है, अभी हम लोग क्या करें. I'm not talking about lockdown exam. I'm talking about even before lockdown, the companies had scheduled like this, and then students were not able to do it. Now, last 3 years, this is a new trend कि ऐसे questions आते हैं, तो logic develop करना वो तो आप लोग on paper कर लोगे, but ऐसे कुछ छोटे-छोटे questions है. Please be in touch. HackerRank, HackerEarth, CodeChef, whatever that suits you. Please keep practicing. At least for the simple one, get used to the environment. I guess जो क्वेश्चंस आप लोगों ने वहां पर पूछे थे, आई गेस आई हैड आंसर्ड. एंड वन ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूजुअली, तो सर ये टेस्ट केसेस के लिए क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन यूजुअली टेस्ट केसेस के लिए नहीं आता है.
ये क्वेश्चन यूजुअली प्रॉपर इंटरव्यू में आता है, जहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये रिवर्स सिंगली लिंक लिस्ट काम कैसे करेगा. ओके, तो लेट अस सी दैट हाउ द रिवर्सिंग a single linked list works. हाँ, वी कैन यूज रिकर्शन हेयर. नहीं, पहले सिंपल करते जाइए, इजंट इट. कैसे है कि हमेशा यू शुड नॉट कम विद लाइक फैंसी आइडियाज. पहले बेसिक तो कर लेते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं. इफ यू नो द बेसिक्स, we can always do it using recursion as well. You'll find that the next question I have already written for you, so don't worry, I will take up that as well. It is already into the list. So this is nothing but my linked list head, और हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं. head is equal to 10, 20, 30 and 40. So sir, how do I do that? Using two pointer? Yes, you can do it using two pointers. Anything else? Any other ideas? I usually use one trick for that. And trick to remember how the things are going. So what I'm saying is that let us not consider it, listen carefully, let us not consider it as a linked list reversing problem. Let us consider it as a problem जहां पर मुझको दो ऑपरेशन करने हैं. कौन कौन से दो ऑपरेशन करने हैं? I want to perform an operation like del first operation. I want to perform an operation like a del first operation, and I want to perform an operation like say add first operation. ये आपको del first का भी कोड आता है और आपको add first का भी कोड आता है, ये मेरा assumption है. ये आता है ना आपको दोनों कोड. A del first code, it is hardly 2 lines of code, and even add first code, if I'm not mistaken, that is also 2 lines of code. अगर जिनको याद नहीं है, वो दोनों कोड अपने सामने ओपन करके रखना, del first के और add first के. Now take a look at this. What I'm trying to tell you. See the trick. Trick is pretty simple. You start इस लिंक, रुको जरा. सबसे पहले what we will do is that, ये जो लिंक लिस्ट है, इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड लिंक लिस्ट. ये जो लिंक लिस्ट है, इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड लिंक लिस्ट. और ये जो लिंक लिस्ट है, इसको हम लोग कहेंगे नई लिंक लिस्ट. ए न्यू लिंक लिस्ट विच इज ऑब्वियसली स्टार्टेड विद द नल. ए नई लिंक लिस्ट विच इज स्टार्टेड विद द नल. सो आई एम सिंपली सेइंग दैट as a piece of code is concerned, I'm simply saying head old head is a new pointer, and I'm saying that old head is equal to head, this is like a first, and then head is equal to null. So एक को मैं कह रहा हूँ old linked list, दूसरे को मैं कह रहा हूँ new linked list. तो सर आप क्या करना है? कुछ नहीं करना है. ये जो आपकी old linked list है, old linked list में से एक नोड डिलीट करना है, del first करना है. What is the logic of del first? What is the logic of del first? You people recall that logic of del first was head is equal to head dot next. Am I correct? Head is equal to head dot next. So I'm saying that let us just go ahead and apply the same. लेकिन जो नोड डिलीट करना है, let me take a pointer to that node. जो नोड डिलीट करना है, let me take a pointer to that node. Simply say temp is equal to old head. A temp is equal to old head, and then take it to the next node. Old head is equal to old head dot next. Old head is equal to old head dot next. So I'm just going to the next node. So what happened? Now as good as this node is deleted from the list, as good as this node is deleted from the list, okay, no problem. अब ये जो node है, listen carefully, the node that you want to delete, I want to add that particular node into this particular linked list. ये वाला node मुझको इस नए वाले linked list के अंदर add करना है. Is it possible? Is it possible? I said yes, it is very easy. Add first का कोड हमें पता है. What is the add first code? New node dot next is equal to head, and head is equal to new node. लेकिन हमारे केस में हमने इसको temp नाम दिया है. You continue further. You simply say that temp dot next is equal to head. Yeah, अभी in this case initially head was null, so temp dot next is equal to head. I'm very sure it will become something like this. And then you simply say, what is the next line? Head is equal to temp. I hope you are able to see that this is a 2 lines of code. If these 2 lines are like add first code, these 2 lines are exactly del first code. Okay, you are done that. लेकिन सर आपने एक ही नोड किया है. अच्छा, एक ही नोड किया है. Why don't you go ahead and you repeat this once again? Why don't you go ahead and repeat this once again?
So how do I repeat it? Very simple. Again you say that temp is equal to old head. Again you go back. Temp is equal to old head. Pay attention. Temp is equal to old head. What you are saying? Old head is equal to old head next. Old head is equal to old head next. Okay, that is good. What is next? Next you are saying that temp is equal temp dot next is equal to head, or temp dot next is equal to head. So you are saying that temp dot next is equal to head. Okay, that is good. And then you are saying that head is equal to temp. Oh, head is equal to temp. All we are doing is this much. करेक्ट? तो वहां से डेल फर्स्ट किया, यहां पर एड फर्स्ट किया. हैव यू नोटेड दैट पहले वो 10-20 था, अब वो 20-10 हो गया है. यू कैन अप्रिशिएट एंड यू कैन रिपीट इट वंस अगेन. लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रिपीट इट वंस मोर. Repeat it once more. Again you say temp is equal to old head. Temp is equal to old head. Temp is equal to old head. Old head is equal to old head next. Old head is equal to old head next. Okay, that is good. Next, the temp next is equal to head. Temp next is equal to head. So I'm saying that temp next is equal to head. So it is pointing to this. Okay, that is good. Temps next is equal to head. So 20 को point कर रहा है. And head is equal to temp. Now head should be 30. Head should be 30. That is in front of you. Oh, it is so simple. Why don't you repeat it once again? Go ahead, repeat it once again. Temp is equal to old head. Temp is equal to old head. Okay, that is good. Next, old head is equal to old head next. A old head is equal to old head next. Old head become null. A old head become null. You are able to see that. Next, temp next is equal to head. Temps next is equal to head. So it is all the way over here. It is all the way over here. Wait for a minute. So this is pointing to this node, not a problem. And last line, what is the last line? Head is equal to temp. Head is equal to temp. Now head should point to the 40. Head should point to the 40. That's it. Have you noted that? Have you noted that initial linked list was 10, 20, 30, 40, and now your linked list is 40, 30, 20, 10. Is it reversed? Yes. I guess I should stop now. Where I should stop? Can you tell me what is the terminating condition that you see over here? इस लूप को कहां पर टर्मिनेट करना है? Yes, absolutely. You are able to see it very well. That all I need to do is that simply say old head is not equal to null. Old head is not equal to null. So जब तक वो null नहीं हो जाता तब तक keep on repeating it and your whole linked list get reverse. I hope, मुझको लगता नहीं कुछ explain करने की वापस से जरूरत होनी चाहिए. It is very simple and very straightforward code. There are only two ways. एक तो del first करो old linked list में से, और नए linked list के अंदर add first करो. दोनों के individual कोड आपको आते हैं. मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, पीपल लर्न दिस कोड बट ऐसे कुछ तो करते हैं. एक दो पॉइंटर ले लो, एक को नाम ट्रैव दे दो, एक को नाम टेम्प दे दो, फिर टेम्प के आगे ट्रैव लगाओ, फिर ट्रैव के पीछे टेम्प लगाओ, फिर उसके जगह पे हेड लगाओ, एंड देन दे गेट कंफ्यूज इन देमसेल्फ. आई बिलीव दैट दिस इज मच क्लीनर अप्रोच टू रिमेंबर. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये पॉइंटर के दो पॉइंटर के नाम ये होंगे, इसका नाम ये होगा, इसके पीछे ये करो. डू नॉट बाय हेड द कोड. यू अंडरस्टैंड द ट्रिक and you understood a trick. It is very easy that you can implement it on your own. Am I correct? अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी टेम्प ट्रैप वगैरह करके किया होगा, then you understand it well exactly what I'm trying to tell you. So you will appreciate this. अगर आपने कभी इस अप्रोच से किया होगा तो फिर अमित का कुछ क्वेश्चन है, इंसर्शन का शिफ्टिंग का लॉजिक लगा सकते हैं क्या विदाउट यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन कंडीशन? यस, यू कैन यूज दैट लॉजिक एज वेल. लेकिन यहाँ पर इंसर्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग नहीं कर रहे, हम लोग पूरा का पूरा नोड ही मूव कर रहे हैं. प्लीज नोट दैट इन दिस पर्टिकुलर केस आई वांट टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट. आई डू नॉट वांट टू डिस्प्ले इट काइंड ऑफ रिवर्स. This is your trick, or this is the way to present the reverse order? I would say that this is a way that you can reverse the linked list. It is not present. यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो किया है, हमने लिंक लिस्ट रिवर्स किया है. हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स डिस्प्ले नहीं कर पाया. There is another question, how to display the linked list in a reverse order. When the question is there, you want to display the linked list in a reverse order. At that time, you are not expected to change the node orders. नोड का ऑर्डर वही रखना है
डिस्प्ले सिर्फ रिवर्स करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये जो है, दिस इज अ वे वी कैन रिवर्स द लिंक लिस्ट। तो पहला नोड लास्ट नोड बनना चाहिए और लास्ट नोड पहला नोड बनना चाहिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन किया है। तो सर इसमें मेरा ट्रिक क्या है? मेरा ट्रिक कुछ नहीं है, जो लोग पहले कर रहे थे, लिसन केयरफुली, जो लोग पहले कर रहे थे वही मैंने भी किया है, लेकिन वो लोग ट्रै और टेम्प और ये वर्ड्स यूज करके ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। आई जस्ट सेड दैट द सेम कोड, जिन लोगों ने इससे पहले ट्रै और टेम्प से किया था, यू कैन गो बैक एंड टेक अ लुक एट द कोड, इवन दैट कोड एंड दिस कोड इज सेम। लेकिन आप लोग वहां पर बाहट कर रहे हो, मैं बाहट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उसको ट्रिक में बता रहा हूं, अच्छा ओके दिस इज व्हाट द कोड इज एक्चुअली। I hope Pooja you got the point, right? Can we do this using del last and add last? Probably yes, you can also think of doing it as a del last and add last, but in that case the time complexity will be issue. I guess Anuja you got the point. हम लोग डेल लास्ट और एड लास्ट करेंगे तो भी आउटपुट वही आने वाला है, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेल लास्ट इटसेल्फ इज O of n, and then add last is again it's O of n, so you are making it more, what is that, more troublesome. I would say that this is like a O1 O1 time complexity. Del first is O1 and even add first is O1. What I will do is that I will try to go ahead and try to type this flow code. Linked list interview questions, you know. तो आई गो अहेड, फाइल न्यू। तब तक आप लोग आपका क्या कहते हैं आईडी रेडी कर लो, मेक योर आईडी रेडी, क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम एंड आई जस्ट नेम इट एज इलेक्ट्रिकल लिंक लिस्ट। This looks good. New class, I can say link list. Namrata, which one? Reverse. Okay, I'll go one. गिव मिनट, तब तक आप लोग आपका जरा थोड़ा सा मशीन चालू कर लो, मशीन चालू कर लो, मशीन चालू ही होगा। ये चालू कर लो एंड गिव मिनट। I'm not going to implement everything once again. I'll be just writing one or two basic functions and I'll be just calling it in a hard-coded way so that we can continue on to the main functions. हम लोग पूरा लिंक लिस्ट फिर से नहीं बनाने वाले हैं। आप लोग पिछला अगर आपके पास लिंक लिस्ट है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो प्राइवेट node head, okay, that is good. Sorry, single linked list constructor where I want to make head is equal to null, that is all right. You want to just go ahead and you want to एक फंक्शन कम से कम पहले लिख लेते हैं, एडलास फंक्शन, ताकि हम लोग लिंक लिस्ट बना सके। अगर लिंक लिस्ट बनी ही नहीं तो रिवर्स कैसे करोगे ना? आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट। तो दैट पार्ट इज वेरी सिंपल। आप लोग पिछले इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर नए से भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। if list is empty, head is equal to new node, otherwise traverse till last node, traverse till last node and then add the node after that. So see, when you are typing a code, please talk to yourself what exactly you are doing. This habit will actually help you during interview. So interview में आपको अलग से उसको बताना नहीं पड़ेगा. So as you are talking to yourself, the interviewer is understanding, okay, what this person is doing, and that is more than sufficient. He is not really interested in, like, talking to you. So he want to know that what you are thinking, how you are writing a code, correct? So that skill is important. Anyway, and then public void reverse
रिवर्स रुको जरा, एक डिस्प्ले का फंक्शन भी होना चाहिए शायद. So we need a kind of a display function as well. So in a display function, I want to display the list. How do I display the list? Give me a minute. System.println, set like a list and display list for नहीं हम लोग while loop से काम चला लेंगे. Trav is equal to head. अरे while trav is not equal to null. You want to print trav's data and then trav is equal to trav's next. All right, that's it. This is what all we are doing. Oh, sorry. Thank you, Shubham. Going ahead. It is there. So like you're going good. And let me just check whether the linked list is working well. Then we will again quickly review the algorithm and then we will again try it whether it is going good or not. So list dot add last 10. अब मैं hard coded data डाल रहा हूँ. User से लेने का काम आप लोग कर सकते हो if you are interested in. We had already done that enough of work onto that. And then list dot display. And I want to just see that whether the linked list is displayed well 10, 20, 30, 40. Yes, 10, 20, 30, 40. What I'm expecting is that list dot reverse, it should be reverse. And once I say reverse, after that, next time if I display, it should again show you something similar. What is that? 40, 30, 20, 10. ये output आना चाहिए after reversing. This is something that I'm looking for. I hope the problem statement is clear. मैं quickly एक बार फिर से एक बार कोड के ऊपर जा रहा हूँ. कोड के ऊपर जा रहा हूँ in the sense फिर से एक बार डायग्राम में जा रहा हूँ and we will try to draw the diagram once again and we will try to explain it once again. The same code. Please pay attention if you could not get it in the first round. कोई बात नहीं. And if you are not getting, please let me know. So you start with the head pointer, pointing to this linked list. So my original linked list is something like this. The original linked list is something like this. So if I want to reverse this linked list, so what trick I'm saying? I'm saying that you consider this linked list as a reverse link, as an old linked list. You consider this linked list as an old linked list, and then you continue, you call the new linked list, you consider a new linked list to be kind of an empty linked list. Okay, if you say that this linked list to be empty linked list, so how exactly we want to go? How exactly we want to go? Let us see one by one. One by one, the very first thing. I'm saying that you delete the node, the first node. You start taking one temporary pointer. It is like a temporary pointer. You take the temporary pointer to this old head. You delete the first node. You delete the first node. How do you delete the first node? So you know it very well. Temp is equal to old head. Temp is equal to old head. And then old head is equal to old head next. This is as good as you have deleted from the old head list. Done. Now जिसको आप लोगों ने del first कर लिया है, and now this is del first. This del first is to be added into this new linked list. Okay, no problem. How do you add it in new linked list? To add in new linked list, all we do is that new node next is equal to head and head is equal to new node. अगर आपने ठीक से नोट किया, अभी यहाँ का head क्या है? Null है. अगर null है, तो temp next will actually become null. Okay, so this is actually pointing to the null is one thing. And second thing, all I need to do is that head should point to this new node. Head should point to that new node. So that is what all we are doing. So is the code of add first. So हम लोगों ने पहले लिंक लिस्ट में से डिलीट किया और नए वाले लिंक लिस्ट के अंदर हम लोगों ने उसको ऐड कर लिया. That's it. This is done. Let us continue further. The similar story you repeat it once again. Again, you repeat the story. Temp is pointing to the old head. Say old head is equal to old head next. Old head is equal to old head next. So this is as good as deleted from this. Now you want to add it into the new list. How do you add it in new list? Temp dot next is equal to head. Temp dot next is equal to head. A head अभी 10 है, तो temp के next में हम लोग head उसको point कर रहे हैं. And then you make head pointing to the temp so that your linked list become 20 and 10. So again you go ahead, you simply make temp pointing to the head. That's it. Nothing much to be done. You continue further. You continue further.
Again, you take a temp over here. Temp is equal to old head. Temp is equal to old head. You continue further. Old head is equal to old head next. This is as good as deleted from that linked list. Then simply say that temps next is equal to head. A head अभी 20 है. So temp का next अभी head को point कर रहा है. Okay, that is good. And then you continue further. Simply say head is equal to temp. So head is equal to temp. Linked list is like this. Okay. Last step. Again you say temp is equal to old head want to go to the next node, which is let's say null. It is null, no problem. And then you want to add this particular temp at the first. How do you add it at the first? So again, temps next is equal to head. Head is right now 30. So temp ka next 30 ko point kar raha hai. You are able to see that. And after that, I want head to be temp. So now my linked list is reverse. I hope Namrata that is clear. डन. सो ऊपर से डेल फर्स्ट के 2 लाइन लिखो, एड फर्स्ट के 2 लाइन लिखो, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डन. सो आई एम सेइंग go ahead, write it in a code. Consider current list as old and new list as empty. So how do I do that? I simply written over here old head is equal to head and head is equal to null. So like a 2 lines we have handled. Now what is the next logic? delete delete first. Yeah, delete का spelling क्या है? Delete first from old list and add first to new list. Correct? So delete first हम उसको temp कहेंगे and that temp I want to add it to this node. So how do I do it? It's very easy. Now temp is equal to delete first. Delete first के लिए पहले तो हमको उसका पॉइंटर लेना पड़ेगा. So old head temp is equal to old head, and then I want to simply say old head is equal to old head dot next. That's it. So this is what as good as deleted from the first list. You deleted from the first list. That temp you want to add it into the new list. Go ahead. Temp dot next is equal to head and head head is equal to temp. That is again 2 lines of code. I'm saying that repeat this until the old list is finished. So old head is not equal to null. जब तक old head is not equal to null, I'm saying that repeat until old head or the old list is finished. Done. That's it. सर ये कोड काम करेगा. I just check. Oh, is it working? I hope you find this. Why don't you copy paste, run it quickly and check it. So easy trick to remember and something that you can do it. I'm waiting for you people to complete it. Amit, your question is not clear. How to know that temp.next will point to the base address 100 of the node, not the address which is only pointing to the base? So what do you mean by address of base and not the address pointing to the base? I didn't get it. It is all about your diagram drawing skill, I would say. So it only means that you are not drawing the diagram properly.
right? Good. So many of you people are able to do it well. That is fantastic. So that is what all I was talking about, how we can reverse a linked list. So मैंने आपको बताया कि not only you reverse a linked list, you also find out a way how you can explain that. By the way, how many pointers are involved into this process? How many pointers are involved into this other than head? Apart from head, how many extra pointers are there? Yes, there are two extra pointers. One is old head pointer and another is a temp pointer. So old head और temp, ये दो पॉइंटर यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है. वो आई अंडरस्टैंड दैट. तो सर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? I will look at this. क्या होना चाहिए? Let's say that sometime the question is asked, so I want to do it using single pointer. Sometimes the question is asked, I want to do it using a single pointer, or I want to do it probably by using recursion. So what exactly I want to do it and how exactly I want to do it? Now this is what our next question is, that where we say that reverse the single linked list using recursion. And if you want to reverse the single linked list using recursion, I already told you some tricks of recursion. Which tricks of recursion I told you? कि जब लोग recursion करते हो तो आपको क्या सोचना चाहिए? What are the things that you need to take care? I guess we discuss. जब हम लोग रिकर्शन पढ़ा था, तो रिकर्शन में मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग रिकर्शन की बात करते हो तो व्हाट यू शुड टॉक, व्हाट यू शुड डिस्कस, व्हाट यू शुड थिंक. So express in terms of itself. Yes, absolutely correct. So you need to find out the problem in terms of itself. You need to find out a problem in terms of itself, and that is kind of a major challenge. That is kind of a major challenge. So that thought process ये पहले आनी चाहिए. और दूसरी चीज, what should be your base condition, कि आपको कहाँ पर जाके रुकना है, what should be your stop condition, that you need to understand. So ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो चीजें ये हमको पहले सोचनी है. And yes, it will take its own time to visualize that. And something जो आपको ideally immediately नहीं सोचना चाहिए, सर वो कैसे एग्जीक्यूट होगा. मैंने आपको पहले ही बताया, these are two different things. अगर आपको रिकर्शन में प्रोग्रामिंग करने की, you want to write good recursive program, you should not worry about how it execute. You should worry about what is the logic that you are trying to put in. And the logic that you are trying to put in, how the logic that you are trying to put in, how that logic that you are trying to put in, first explain the problem in terms of itself. If you are not able to explain the problem in terms of itself, never think of sir इसको मैं recursion से कैसे करूं. वो करने का कोई मतलब ही नहीं है. The biggest mistake that we always do is that we try to convert the existing loop code into the recursion. अगर आप loop के कोड को recursion में करने की सोच रहे हो, अगर उसके हिसाब से लॉजिक लगा रहे हो, तो I would say that आप गलत कर रहे हो. You are already on to the wrong track. Better you don't do it. बेटर यू डोंट डू इट. वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला, राइट? तो सर हम लोग कैसे सोच सकते हैं? कोशिश करते हैं. सर आपको याद है, टू बी फ्रैंक मुझको भी ये कोड याद नहीं है. मैं सोच के रखता नहीं हूं, ऑन द फ्लाई बना लेता हूं. सो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन. लेट अस ट्राई टू बिल्ड अ कोड. हेड इज लेट्स से 10, 20, 30, 40, kind of a linked list. If I want to reverse the linked list, listen carefully. If I want to reverse the linked list, you talk about this linked list only. If you want to reverse the linked list, what exactly you need to do? What exactly you need to do? I say that this problem can be broken into the two parts. एक नोड अभी मेरे हाथ में है, एक नोड अभी मेरे हाथ में है, that I understand. और ये बचा हुआ लिंक लिस्ट जो है, ये मुझको रिवर्स करना है. So what I'm saying is that if you want to reverse this linked list, see it carefully. If you really want to reverse this linked list, so you have got this one node in your hand, and then you want to reverse the rest of the linked list. You want to reverse actually the rest of the linked list. So sir, what about this node? See it carefully. If you want to reverse about this node, I'm saying that you need to first reverse the rest of the linked list, and then you need to think of this. I repeat once again. You start with this. मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, अगर आपको ये पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि बची हुई जो लिंक लिस्ट है, द रेस्ट ऑफ द जो लिंक लिस्ट है, वो लिंक लिस्ट पहले रिवर्स करनी चाहिए. You need to first reverse this particular linked list, and after you reverse this particular linked list, ये जो आपका करंट नोड है, ये जो आपका करंट नोड है, वो करंट नोड आपको इस लिंक लिस्ट के एंड में ऐड करना है,
और उसके नेक्स्ट में नल करना है। आपको ये नोड उस लिंक लिस्ट के एंड में ऐड करना है और उसके नेक्स्ट को नल करना है। So what I'm saying is that how I'm trying to explain the problem in terms of itself, I'm saying that first reverse the rest of the linked list, first reverse the rest of the linked list, और उसके बाद में उस लिंक लिस्ट के एंड में जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में करंट नोड ऐड कर लो और इस नोड का नेक्स्ट नल कर लो। कौन सा करंट नोड जो है 10 उसका नेक्स्ट नल कर दो। तो सर नहीं क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू द स्टोरीज फर्दर। यू कंटिन्यू द स्टोरी फर्दर, ऑब्वियसली टू रिवर्स दिस मच ऑफ पोर्शन, to reverse this much of portion, obviously my linked list is something like this: 20, 30, 40 and something like this, and this is a starting point of my linked list. Again, how do I reverse this part? How do I reverse this part? Again logic remains same, again logic remains same. What I'm saying, you first reverse this much of portion of a linked list, so you make it kind of, let's say 40 and 30. You first reverse this much of portion, and after you reverse this much of portion, then ये जो node है, you add this node somewhere at the end of the linked list. You made this node somewhere at the end of the linked list and make its next null. Okay, but so still it is not clear, still it is not clear. Let us just continue further. Sir, what about this part of a linked list? For this part of a linked list, you find that again you have got like a 30 and 40. The head is pointing to this particular linked list and it is something like this. I want to reverse this. How do you reverse this? I said that you first reverse this much of portion. You first reverse this much of portion. If you are reversing this much of portion, एक बात बताओ, इसमें रिवर्स क्या करना है? अरे इसमें रिवर्स क्या करना है? इसमें रिवर्स कुछ नहीं करना है, वो अकेला ही नोड है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। सो इफ इट इज द लास्ट नोड, इफ इट इज द लास्ट नोड, इसका रिवर्स तो हो चुका, हेड इज पॉइंटिंग टू 40, इसका रिवर्स तो हो चुका, हेड इज इक्वल टू 40, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। एंड देन व्हाट आई एम सेइंग, ये जो नोड था, ये जो नोड था, दिस नोड आई वांट टू ऐड इट आफ्टर दिस। ये जो नोड था, ये नोड आई वांट टू ऐड इट आफ्टर दिस। तो आई एम सेइंग दैट your logic goes something like this. Every time all I need to do is that I need to first, एक मिनट, I need to first reverse the rest of the part. कोई बहुत अजीब नहीं है, कोई बहुत अजीब नहीं है। यही चीज आप लोगों ने फैक्टोरियल में भी देखी थी। जब लोग कहते हैं कि मुझको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप लोग कह रहे हो कि 5 का फैक्टोरियल मत निकालो, 5 इंटू पहले 4 का फैक्टोरियल पहले खत्म करो। जब 4 का फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाएगा, उसको आप लोग 5 के फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करना। और जब लोग 4 का फैक्टोरियल निकालने जा रहे हो जब लोग 4 का फैक्टोरियल निकालने जा रहे हो, तो 4 के फैक्टोरियल के लिए पहले 3 के फैक्टोरियल को निकालो और उसका रिजल्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। और जब 3 का फैक्टोरियल निकालने जा रहे हो, तो पहले 2 का फैक्टोरियल निकालो और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जो कंसेप्ट आपने वहां पर देखा है, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर निकाल। Rinki is asking the question, what if thousands of node of data, how do we swap? We never think of the thousands of node. हम लोग 2-3 इटरेशन हमेशा करके देखते हैं, और जो लॉजिक 2-3 नोड में चलता है, वही लॉजिक 1000 नोड्स में भी चलता है। आपको कोई बहुत अलग से सोचना पड़ता है, ऐसा मुझको नहीं लगता, right? So it is not that complicated. It is not that complicated. So all you need to do is that, all you need to do is that, हम लोग बात कर रहे थे, हमें सिर्फ बची हुई लिंक लिस्ट को पहले रिवर्स करने के बारे में सोचना है। बची हुई लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के बारे में सोचना है, और जो भी उस बची हुई लिंक लिस्ट जब भी हम लोग रिवर्स करेंगे, ये बची हुई लिंक लिस्ट जो रिवर्स करेंगे, उस बची हुई लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के बाद में उसका जो लास्ट नोड है, हैव लुक एट दिस, उसका जो लास्ट नोड है, उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमारा करंट नोड है, जो हमारा करंट नोड है, वो करंट नोड हमें ऐड करना है, वो करंट नोड हमें ऐड करना है। एंड दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो ऐसा कुछ कोड हमको करना है। तो लेट्स सी हाउ ऑल वी कैन थिंक ऑफ, हाउ ऑल वी कैन थिंक ऑफ। तो मैं जरा कोड लिखने की कोशिश करता हूं। अगेन आई एम ट्राइंग टू राइट अ रफ कोड, आई एम ट्राइंग टू राइट अ रफ कोड। रिवर्स यूजिंग रिकर्शन मैं पहले बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन to understand and digest. It will take its own time. I really don't mind it repeating it twice, thrice, even 4 times. फिर से मैं बता रहा हूं, I don't mind it repeating twice, thrice, 4 times. You should have patience, you should have patience, and just first listen first. Let me complete whole stuff, connect everything together,
and I will repeat it once again. Don't worry. Still not understood? Then be specific to your question. बहुत आगे का पहले से मत सोचो. बहुत आगे का सोच के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते. तो पहले जो बता रहा हूं वो पहले फॉलो करते हैं और उसके बाद में मैंने कह रहा एक मिनट आई कैन ऑलवेज कम विद द रेडीमेड सॉल्यूशन. मैं आपको रेडीमेड सॉल्यूशन दिखा सकता हूं. ये सॉल्यूशन है एंड देन आई कैन एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. ये जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं हाउ वी कैन बिल्ड द सॉल्यूशन. और बिल्ड सॉल्यूशन उसके लिए पहली चीज तो आपकी थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन होना जरूरी है. अगर आप खुद के हिसाब से सोच रहे हो और फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो नहीं सर ये ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर योरसेल्फ. यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, रेडीमेड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो इसलिए आप लोग अगर आपको दिमाग लगाना है मेरा लेक्चर खत्म होने दो, फिर खुद के हिसाब से खुद का दिमाग अलग से लगाना. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट. यू कैन डेफिनेटली कम अप विद द सॉल्यूशन. यू माइट कम इवन अ बेटर सॉल्यूशन देन मी. इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. एब्सोल्युटली पॉसिबल. बट अभी लेक्चर में आए हो तो फिलहाल तो जस्ट थिंक ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. आई होप यू आर सिंक अप. हाँ तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हमें कहां पर था. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग इसका कोड कैसे लिखेंगे. सो आई एम सेइंग दैट आई माइट थिंक ऑफ राइटिंग something called a recursive reverse. A recursive reverse, and for recursive reverse I am saying that I am passing some h. I am passing some h, not really the head, but this is kind of a temporary head that I am getting it in between. तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, you begin your linked list, but आपको पहले क्या करना है, having any node at your hand, having any node at your hand, what is your problem statement? You first क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले बची हुई लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है. ओके, इफ यू आर सेइंग दैट पहले बची हुई लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, आई विल से दैट रिकर्सिव ऑफ रिवर्स. ये मुझको बची हुई लिंक लिस्ट कैसे मिलेगी, मुझको बची हुई लिंक लिस्ट कैसे मिलेगी. How do I get the rest of the linked list? I got pointed to this. I got pointed to this. Can you please tell me मुझको बची हुई linked list कैसे मिलेगी? How do I consider? Yes, absolutely correct. So बची हुई linked list is simply I can say that it is edge dot next. I can simply say that it is edge dot next and that is in front of you. Okay, I understood this. That is not a problem. But once I reverse this linked list, what I'm looking for? ये linked list reverse होने के बाद में क्या होना चाहिए? ये लिंक लिस्ट रिवर्स होने के बाद में क्या होना चाहिए, आई शुड बी गेटिंग द पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड. ये जो बची हुई लिंक लिस्ट जो आपने रिवर्स की है, ये बची हुई लिंक लिस्ट जो भी आप लोगों ने रिवर्स की है, ये जो बची हुई लिंक लिस्ट आपने रिवर्स की है उसके लास्ट नोड का पॉइंटर मुझको चाहिए. ओके, यू वांट अ पॉइंटर टू द लास्ट नोड, सो आई कैन जस्ट कलेक्ट इट इनटू दिस. I can just collect it into this. So tel is equal to tel again temporary node है. हम लोग कोई node head node tel नहीं ले रहे हैं. हमारे पास global pointer एक ही है, head ही है. तो मैं उसका reverse node I'm taking it and then उसके next में मैं current node add कर रहा हूँ. So I'm saying that 20 के next में 20 के next में I'm adding 10. Okay, that is good. एंड नॉट ओनली 20 के नेक्स्ट में आई एम एडिंग 10, बट ये जो 10 है ये 10 के नेक्स्ट में ऑलरेडी कुछ तो हो सकता है. आई जस्ट वांट टू मेक इट नल. ओके, गो अहेड एंड यू जस्ट मेक इट हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. नाउ डोंट यू थिंक दैट दिस दिस नोड, ये जो आपका एज था, ये जो आपका नोड था, नाउ दिस बिकेम ए लास्ट नोड, isn't it? Now this become a last node, and if you say that if this is a last node, I want to even return that last node from here. I want to return that last node for from here. क्योंकि ये लास्ट नोड अगर मैं यहां से रिटर्न करूंगा तभी मुझको इसके प्रीवियस नोड के अंदर ये वाला पॉइंटर मिलेगा, और अगर मुझको यहाँ पर ये पॉइंटर मिल गया तो ही उसके नेक्स्ट में मैं वापस से उसके पहले वाला हेड ऐड कर सकता हूँ. इट इज देयर. सो ऑब्वियसली माय रिटर्न टाइप आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज अ नोड. But by the way, what is the base condition that I need to write it? Or the base condition that I need to mention over here is that if what is the base condition? Base condition ये हमारा जो लास्ट वाला नोड था, ये जो हमारा लास्ट वाला नोड था जिसका नेक्स्ट नल था. सो आई एम सेइंग दैट इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू if head dot next is equal to null, I understand that this is my last node, and if it is last node, what I want to do? If this is last node, what I want to do?
Obviously, I want to return that itself. I have to return that itself. But before that, yes, I want to say head is equal to h. Now this head is my linked list main global head. This head is my linked list global head. That's it. Nothing else to be done. My solution I have built. I'm very sure in a whole class of 300 students, not even 10% people have digested this. But that is what I'm saying, that इसलिए लोग मेरे पीछे पड़ रहे थे, sir, why don't you till it with recursion first? So with recursion, as I said, that you need to build the logic. You need to build the logic, and don't worry, मैं repeat करने ही वाला हूँ. I'll repeat the whole story once again, and trust me, even though I repeat it twice or thrice, I'm very sure 50% of class will not understand that. And even though they do not understand it, फिर I will be just going through the code line by line. So कुछ लोगों को कोड बिल्ड करने की टेक्निक समझ में आती है, जिनको कोड बिल्ड करने की टेक्निक समझ में आती है, वेल एंड गुड. जिसको नहीं समझ में आती है, उसको बिल्ड किया हुआ कोड समझ में आता है. It's like one of the thing. Either way, I really don't bother. I'm just saying that it was solution. I'll repeat it once again for you. I'll repeat it once again for you. दो बार वैसे भी मैं रिपीट कर ही रहा हूँ. मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ हाउ टू बिल्ड द कोड. उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो कोड बनाया है वो कोड काम कैसे कर रहा है. आई होप यू रिकॉल, ऐसे ही मैंने रिकर्शन आपको पढ़ाया था. जब हम लोगों ने बाइनरी सर्च बनाया था, तो हम लोग दोनों चीजें, आप लोग मिक्सअप मत करो प्लीज. आप लोग यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं कोड लिखता हूँ, लोग रहे सर ये काम कैसे करेगा. अरे काम कैसे करेगा ये बाद में देखना, पहले कोड तो लिख लो. सो एट दैट टाइम दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो, एंड दैट मेक्स योर लाइफ मिजरेबल. सो मैं बोला कि हाउ टू बिल्ड द लॉजिक. रिकर्शन का लॉजिक बिल्ड करने का मेंटालिटी अलग होता है, और रिकर्शन का एग्जीक्यूशन समझने का मेंटालिटी अलग होता है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. जब तक आप लोग दोनों चीजें क्लब करते रहोगे, आपको जिंदगी भर रिकर्शन समझ में नहीं आएगा. सो डिवाइड इनटू द टू फेजेस. Phase number one, build the code. Phase number two, understand how it is working. Correct? So let us again focus on how to build the code. How to build the code. और जल्दबाजी मत करना. Have patience. मुझको कोई जल्दी नहीं है. So this is head pointing to 10, pointing to 20, pointing to 30, pointing to 40, like a reverse. तो recursive सोच क्या है? Recursive सोच क्या है? Explaining problem in terms of itself. एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मेरा करंट नोड है, ये जहां से मेरी लिंक लिस्ट चालू हो रही है, आई एम कॉलिंग इट एज एच. जहां से मेरी लिंक लिस्ट चालू हो रही है, दैट इज एच पार्ट. व्हाट आई एम सेइंग, ऑल आई नीड टू डू इज दैट ऑल आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू रिवर्स द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. I need to reverse the rest of the linked list. So I'm just going ahead. So there are the process I'm trying to explain into the part, and the first part I'm saying that reverse next, or rather reverse rest of the list. Obviously from next node. It is the rest of the list from the next node. जो भी लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स करो. सर वो कैसे रिवर्स करना है बाद में सोचते हैं. लेट अस जस्ट डिस्कस. जैसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, तो एट दैट टाइम हम लोग उतना ही सोचते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. अब फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन कैसे होगा, वो जैसे भी होगा होने दो. हमें क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन लेना है, और उसके बाद में उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर थिंकिंग. यहां पर भी उतना ही सोचो. यहां पर क्या सोचो, ये मेरे पास h का नोड है, और मैंने कहा रेस्ट ऑफ द नोड, रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट मुझको रिवर्स करनी है. तो लेट्स से दैट यू हैव डन रिवर्सल ऑफ दैट लिंक लिस्ट. यू रिवर्स दैट लिंक लिस्ट. तो व्हाट इज माय न्यू, व्हाट इज द पार्ट क्रिएटेड. सो लाइक अ 40, this is 30, this is 20, and I'm saying that you consider this as a last node. You consider t as like a last node. So अब ये रिवर्स हो गया है with I have got a pointer to the last node. I got a pointer to the last node. What is second step I need to do? Look at the diagram and tell me what is second step that I need to do. अब मुझको यहां पर क्या करना चाहिए. मेरे पास इतना पार्ट मैंने किया हुआ है, मेरे पास इतना पार्ट किया हुआ है, और मेरे पास ये एच नोड भी है. तो अब मुझको क्या करना चाहिए, जो मेरा एच नोड है, जो मेरा एच नोड है, ऐसा नहीं, फॉरगेट एच और टी भी नहीं बताओगे तो भी चलेगा. 10 को 20 के एंड में ऐड करना चाहिए. आई होप इट इज वेरी सिंपल. 10 को
20 के एंड में ऐड करना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू आर सेइंग, एंड इफ यू आर सेइंग समथिंग, go ahead and write it over here. So I'm saying that what I need to do is that t is next, add current node, a current node जिसको हम लोगों ने h कहा है, at end, और at end के नेक्स्ट से h है after last node, after last node, after last node code can be written in a very one line, t dot next is equal to h. तो ये 10 मुझको यहां पर ऐड करना है, ऐसे आप लोग कह रहे हो. बट इज इट सफिशिएंट? और कुछ करना चाहिए? टेक अ लुक एट द डायग्राम, टेक अ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी, आपको और कुछ करना चाहिए? अगर आपने इसको ऐड कर दिया, दैट इज ओके, आई अंडरस्टूड दैट, बट इसके अलावा और कुछ करना चाहिए, क्योंकि 10 का नेक्स्ट अभी भी 20 को पास कर रहा है. हाँ, प्लीज नोट दैट 10 का नेक्स्ट अभी भी 20 को पॉइंट कर रहा है. सो जब मैं इसको 10 को यहां पर ऐड कर रहा हूं, जब मैं 10 को यहां पर ऐड कर रहा हूं, टी डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट अभी भी 20 को पॉइंट कर रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा. मुझको इसको इनफाइनाइट लूप में नहीं भेजना है, 10 के नेक्स्ट को नल करना है. सो यू कंटिन्यू फर्दर. व्हाट इज दैट? Make current node next as null, so that, please note that now you understand that what you are achieving over here. Now the current node became last node. I hope you agree. See the diagram, am I correct? Now current node became the last node. Do you agree with this? Yes, that node become last node. और आपको आपकी जो पूरी रिवर्सल प्रोसेस है, have a look at this reversal process. Read the step number 2. What your step number 2 is saying? Add the current node after the last node. तो आपके पास last node का पॉइंटर तो होना चाहिए था ना. So how do you get a pointer to the last node? अब मैं बोल रहा हूँ कि in the current iteration or a current recursive call, this node itself become kind of a last node. I'm simply saying that return the current node. It is written the current node because now it is the last node. वो जो last node है, आप उसको return कर दो. That is what all you need to do it. This is nothing but my recursive process. This is nothing but my recursive process. I understood recursive process ऐसी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझको बेस कंडीशन भी चाहिए. ओके, बेस कंडीशन के लिए वी विल डू बिट ऑफ पेपर वर्क. इवन दो आई कैन ऑलवेज कम अप विद लाइक बेस्ट केस की ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिर भी आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं पेपर वर्क कर रहा हूं, ताकि बाद में आपको आगे वाला पार्ट भी समझ में आ जाए अच्छे से. गोइंग अहेड, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट अस टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. ये जो रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट है, सर इतनी लिंक लिस्ट ये उल्टी कैसी होगी, ये बता दो हमको. चलो, आई एम सेइंग दैट लेट्स ऐड ये लिंक लिस्ट ऐसी है 20, 30, 40. जिन लोगों को ये समझना है सर वो अंदर कैसे काम कर रहा है, तो मैं वही चीज आपको पेपर वर्क करके दिखा रहा हूं. सो एच का नेक्स्ट आपने आगे भेजा है, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं. सो 20, 30 एंड 40. ओके, दैट इज गुड. अब इसका रिकर्सिव कॉल कैसे जाएगा? इसका रिकर्सिव कॉल ऐसे जाएगा, बची हुई लिंक लिस्ट रिवर्स कर दो. ये बची हुई लिंक लिस्ट रिवर्स कर दो. सो दैट विल बी काइंड ऑफ 40, दैट विल बी काइंड ऑफ 40 एंड 30, दैट विल बी 40 एंड 30. ये रिवर्स हो गया. और फिर हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो नोड है, ये नोड इसके एंड में ऐड होना चाहिए. This is how it should work. This is what we are saying. But again the question remains same. A question remains same. How this 30 and 40, ये जो पार्ट है, इतना वाला लिंक लिस्ट ये कैसे रिवर्स होगा? अच्छा, ये वाला लिंक लिस्ट कैसे रिवर्स होगा? Again you continue further. We have got 30, we have got 40. H is pointing to that. There is no trouble. This is there. Again you follow the same algorithm once again. What is same algorithm? I'm saying that you reverse the rest of the list. You reverse the rest of the list. If you reverse the rest of the list, what I'm getting, if you reverse the list of the list, what I'm getting is 40. What I'm getting is 40. और इस 40 के नेक्स्ट में, इस 40 के नेक्स्ट में you add 30. Okay, you add 30 and this is done. Okay, that is okay. उसका next null कर दो. But again, still there is a question. So how do I delete? Sorry, how do I reverse this much of part? ये वाला जो पार्ट था, इसको कैसे रिवर्स करूं? आई गेस अगर ये मेरा h है, तो ऐसे केस में मैं इसको रिवर्स कैसे करूं?
एक बात बताओ, इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए? देयर इज अ सिंगल नोड, इफ इट इज अ सिंगल नोड, इसको रिवर्स करना पॉसिबल है क्या? इफ इट इज सिंगल नोड, इसको रिवर्स करना पॉसिबल है क्या? नॉट एट ऑल। आई सिंपली से दैट इसको रिवर्स करने का मतलब है, इसी को, ये जो नोड है, इसी को तुम्हारा ग्लोबल हेड पॉइंटर बनाओ। तुम्हारे लिस्ट का जो मेन हेड पॉइंटर है, इसी को बना दो, और जस्ट वो खुद ही लास्ट नोड है। अब इसका नेक्स्ट, इसकी बची हुई लिंक लिस्ट, इसमें बची हुई लिंक लिस्ट ही नहीं है। रीड इट, व्हाट यू आर रिटर्न, व्हाट यू आर रिटर्न, रिवर्स द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। लेकिन यहां पर अगर आपने इस एच को छोड़ दिया, तो इसके बाद में बची हुई लिंक लिस्ट है ही नहीं। अगर बची हुई लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो रिवर्स किसको कर रहे हो भाई? रिवर्स किसको कर रहे हो? किसी को रिवर्स नहीं कर रहे हैं। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट आपका जो ग्लोबल हेड पॉइंटर है, जो लिस्ट का जो मेन हेड पॉइंटर है, वो इसको पॉइंट करवाओ और इस किस्से को यहीं पर खत्म कर दो। सो विल इट वर्क? इट शुड वर्क, इट शुड वर्क, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो आपका जो पूरा कोड है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हाट इज द बेस कंडीशन टू बी कंसीडर्ड ओवर हियर? द बेस कंडीशन टू बी कंसीडर्ड ओवर हियर, if list has single node, single node, what is that? Consider, mark it as head and return it because it is last node. एक ही नोड होगा तो वही लास्ट नोड भी होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक रिकर्सिव कॉल में हम लोग लास्ट फंक्शन वापस से रिटर्न कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ऑल लॉजिक दैट वी आर ट्राइंग टू अप्लाई। सो दैट इज नथिंग बट योर बेस कंडीशन, दैट इज नथिंग बट योर टर्मिनेटिंग कंडीशन। नाउ यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये कोड काम करता है क्या? क्या ये कोड काम करता है क्या? ओके, आई विल गो बैक और चेक करेंगे ये कोड काम करता है क्या। आई विल राइट अ न्यू फंक्शन ओवर देयर, पब्लिक void recursive reverse. This is a reverse, but this is like a recursive reverse, recursive reverse, and I'm going to pass a node h into that, and this is like a node, हाँ, what I am saying, अब जो आप लोगों ने वहां पर लिखा है उसको फॉलो करो वन बाय वन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर रिटर्न? रिवर्स द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। ओके, यू आर सेइंग दैट यू वांट टू रिवर्स द रेस्ट ऑफ द लिस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द लिस्ट इज अबाउट एज डॉट नेक्स्ट। ए बेरे रिवर्स रेस्ट ऑफ द लिस्ट, ये मैंने रिवर्स कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन दैट यू आर रिटर्न? पॉइंट नंबर 2, एड द करंट नोड आफ्टर द लास्ट नोड। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझको लास्ट नोड वापस से चाहिए। सो आई सिंपली दैट node is equal to t, and I can simply say t dot next is equal to h. A t dot next is equal to h. Am I correct? Yes. तो ये जो मेरा करंट नोड था h, इसको मैंने लास्ट नोड के, t मतलब मैं इसको टेल कह रहा हूं, सो लास्ट नोड के नेक्स्ट में मैंने h को ऐड कर दिया। दैट इज डन। What is the third line of code? Make the current nodes next is equal to null. Oh, you are saying so? Then I will definitely follow that. H dot next is equal to null. Oh, that is also done. What is the next job to be done? The current node, अब वो लास्ट नोड बन गया है तो उसी को रिटर्न कर दो। ओके, उसको रिटर्न भी कर दिया। So hardly 4 lines of code is written, which is explaining a process in terms of itself. Wait, but what is the base condition? My base condition is that if my linked list is having a single node, if linked list is having a single node, what to do? Or what to do in this particular case? I'm simply saying that जो मेरा मेन हेड पॉइंटर है, मैं कह रहा हूं कि वही, ये आइडियली क्या होना चाहिए, पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स होने के बाद में, अभी हेड स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स होने के बाद में हेड एंड में पॉइंट करना चाहिए था। सो वही मैं कह रहा हूं कि जो भी लास्ट नोड होगा, माय ग्लोबल हेड, मेरा लिस्ट का जो मेन हेड है, दैट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, दैट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, एंड देन आई कैन सिंपली से ये जो मेरा करंट नोड है, दैट इटसेल्फ इज लास्ट नोड, क्योंकि अभी वो सिंगल नोड बचा हुआ है, तो पहला और लास्ट नोड वो एक ही है। यू कैन सिंपली से रिटर्न एच, दैट्स इट, कोड इज कंप्लीटेड। कोड इज कंप्लीटेड, सिर्फ कॉल करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डू आई कॉल दिस? इसको मैं क्या पास करूं? कैन यू प्लीज हेल्प मी? इसको कॉल करने के लिए मैं इसको क्या पास करूं? मैं इसको हेड पास करूं? ओ, कितने इंटेलिजेंट लोग आप। तो एक बात बताओ, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर सेइंग दैट आई शुड बी पासिंग लिस्ट डॉट रिकर्सिव रिवर्स, एंड आई शुड बी पासिंग हेड ओवर हियर, राइट? व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट, हेड पास करना चाहिए। हाउ डू आई पास लिस्ट डॉट हेड? इज इट ओके? ये जो मेरा लिस्ट है उसका मैंने हेड पास कर दिया, इज इट ओके? एंड इफ इट इज नॉट ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? अरे प्रॉब्लम क्या हो तो बताओ।
ये सिर्फ प्राइवेट डेटा है। प्रॉब्लम ये है, एक मिनट, लॉजिकली करेक्ट है, लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, आपने जो लॉजिकली कहा वो सही है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हेड प्राइवेट है। सॉल्यूशन प्लीज। ये हेड प्राइवेट है, हेड प्राइवेट है। हाँ, one of the solution is that go ahead and write the getter method. Yes, you can write a get head method. You can write a get head method. You get the pointer to the node and then you can return it. And that is absolutely possible. That is absolutely possible that you can do it. Vishakha, I guess you are doing something wrong. तो what I'm saying is that ये आप लोग कर सकते हो, एक गेटर मेथड आप लोग कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। प्रणव, प्रणव का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। द प्रणव इज सेइंग दैट एक काम कर दो, मेक द हेड पब्लिक। Welcome to the world of OOP, Pranav. Even though this solution is really good, that will solve our problem. That will solve our problem. You can always go there. But then I guess फिर संदीप सर की सारी मेहनत बेकार गई, ऐसा मेरे को बहुत लगेगा। अगर आपने इसको पब्लिक बना दिया, so will it work? Yes, it will definitely work. It will definitely work. But in that case, फिर आप लोग OOP कर ही क्यों रहे हो? ये रिवर्स भी हो रहा है। See, the things are working. और फिर वो आप लोगों ने इतने प्यार से जवाब पढ़ा था कि ओपी, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई गेस दिस इज प्रीटी डेंजरस, इजंट इट? सो यू डू नॉट वांट टू रियली प्ले विद द सिक्योरिटी। तो कर सकते हो, वर्क हो जाएगा, बट डोंट डू दैट। बेटर अप्रोच इज दैट आइदर राइट अ गेटर, बट वेट, राइटिंग गेटर इज अगेन गिविंग अ नोड पॉइंटर टू द मेन कोड। ए मेन को क्यों बता रहे हो कि तुम्हारा तुम्हारा नोड पॉइंटर क्या है? मेन को उससे कोई लेने देना नहीं है। अपने जावा के कलेक्शन पढ़े, इन जावा के कलेक्शन में आपको कभी नोड का पॉइंटर मिलता है? अपने जावा के कलेक्शन पढ़े, अपने जावा का एरे लिस्ट यूज किया, अपने जावा का वेक्टर यूज किया, अपने जावा का यूज किया है, तो वो कभी भी आपको नोड का पॉइंटर आपके हाथ में देते हैं? कभी नहीं देते। वो कहते हैं कि व्हाई वी शुड गिव यू नोड पॉइंटर, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। मेन के कोड में कभी भी नोड का पॉइंटर नहीं आना चाहिए। व्हाट इज लाइक अल्टरनेटिव? हैव लुक एट दिस। द अल्टरनेटिव दैट आई कैन डू इज समथिंग, आई कैन हैव अ रैपर फंक्शन ऑन दिस। I can have a wrapper function on this, recursive reverse, and this function I will make a call to the original function with the head pointer. I hope this is a better trick. This is a better trick. अब इन दिस पर्टिकुलर केस मुझको मेरा हेड पॉइंटर बाहर नहीं देना पड़ेगा, तो बाहर से मैं सिर्फ इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। बाहर से मैं सिर्फ इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, इसको कॉल ही नहीं करूंगा। आप चाहो तो आप चाहो तो आप इसको प्रोटेक्टेड भी बना सकते हो, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट भी बना सकते हो। क्यों? आई डू नॉट वांट टू गिव दिस फंक्शन एक्सेस आउटसाइड द क्लास। सो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आउटसाइड द क्लास कोई तो मेरे इस फंक्शन को कॉल करे। आई कैन मेक इट दिस फंक्शन डायरेक्टली एज अ प्राइवेट फंक्शन। आई डू नॉट वांट कि कोई बाहर से उसको कॉल करे। कॉल किसको करे? बाहर से लोग सिर्फ इसको कॉल करे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगेन, इसको प्राइवेट बनाना है नहीं बनाना है ये आपका चॉइस है। आप पब्लिक रखोगे तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आई एम सेइंग दैट let people call this, and this one will internally make a call to the recursive one, make a call to the recursive one, and this will make your life quite easy. Recursive reverse। अब मेरा स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ हुआ है ऐसा मेरे को बहुत लग रहा है। Vishakha, is your code is working? I'm doubtful. Done. And this is okay. Is it working? Oh, it is working. Why don't you try it at your end? तब तक मैं जरा विशाखा का कोड देखता हूँ। अच्छा, okay, you are talking about wrapper function. Yes, Vishaka, that is correct. Whatever you are doing is correct. It is just a wrapper. आपने सिर्फ एक अलग से वेरिएबल बनाया है, मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली उसको पास किया। इट इज वन एंड द सेम। 4 पॉइंट नहीं समझा सर। 4 पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट? अमित, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। फोर्थ पॉइंट, ओके। द रिटर्न द करंट नोड, रिटर्न द करंट नोड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये हर बार, every time, take a look at the diagram, every time you are adding 10 at the end, if you are adding 10 at the end, so that becomes a last node, that becomes a last node,
Every time you are adding 20 at the end, that becomes a last node. Every time you are adding 30 at the end, that becomes a last node. Have a look at this. जब आप लोग यहाँ से 40 रिटर्न करोगे, see it carefully, and not only for Amit, everyone. जब यहाँ से हम लोग 40 रिटर्न करेंगे, that 40 you are getting a pointer to the last node, and then in a previous call I'm talking about. So यहाँ से जो previous call में जाएगा, तो previous call के अंदर आप लोग उसके बाद में 30 ऐड कर सकते हो. यहाँ पर जो आप लोगों ने 30 ऐड किया है, 30 ऐड किया है, दैट गोज इन अ प्रीवियस कॉल, दैट गोज इन अ प्रीवियस कॉल, जिसके नेक्स्ट में आप लोग 20 ऐड कर सकते हो. जो 20 आपने यहाँ पर ऐड किया है, दैट 20 गोज इन लाइक अ रिवर्स कॉल, व्हाट इज दैट, प्रीवियस कॉल, जहां पर आपने उसको टी में कलेक्ट किया था. सो दैट इज नथिंग बट योर लास्ट नोड, जिसको आप लोग 10 में कवर कर सकते हो, जिसके एंड में आप लोग 10 अटैच कर सकते हो. सो व्हाई वी आर रिटर्निंग द करंट नोड ओवर देयर? If we are returning current node, because at any position when you are adding 20 over there, now 20 became the last node, a 20 became the last node, that last node you are passing to the previous call, that last node you are passing to the previous call, and into the previous call what you want to do? Oh, you are collected in a t, you are collected in a t, and you want that current node. अब इसका current node क्या है? previous call का current node क्या है? 10. that 10 you want to add it after this node, or that I want to add it after this node is 20 के बाद में ऐड करना है. I hope Amit you are able to connect it now better. तो जो हम लोग यहां से रिटर्न कर रहे हैं, उसके प्रीवियस कॉल में रिटर्न कर रहा है. वापस से एक बार फिबोनाची सीरीज याद करने की कोशिश करो. जब हम लोग कर रहे थे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का रिजल्ट कैलकुलेट होके वो रिजल्ट वापस से पिछले पोजीशन पे जा रहा था 6, और बाद में हम लोग 4 इंटू 6 कर पा रहे थे. एग्जैक्टली सिमिलर, जो कुछ भी हम लोग यहां से रिटर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग यहां से रिटर्न कर रहे हैं, ये लास्ट नोड है, ये रिवर्स होके जा रहा है पिछले कॉल में. जब पिछले कॉल में हम उसको टी में कलेक्ट कर रहे हैं, जब उसको टी में कलेक्ट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम जो करंट नोड है, एक करंट नोड है 10, तो उस 10 को हम लोग टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एच कर रहे हैं. टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एच कर रहे हैं. आई होप दिस इज मेकिंग अ सेंस देयर. आप लोगों ने ये कोड रन करके देखा है क्या? कैन यू ट्राई इट एट योर एंड? वर्किंग? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है. व्हाट इफ योर लिस्ट इज एम्प्टी? I guess if your list is empty, it is going to throw the exception. It is going to throw the exception at a very first place. It is going to throw the exception at a very first place. I just suggest that you put one extra check there. If head is not equal to null, if head is not equal to null, then and only then try to reverse it. Because if it is an empty list, if it is an empty list, then this is going to throw the exception at the very first line, saying that null pointer exception at this line. क्योंकि अगर वो null होगा तो null dot next मतलब null pointer exception आने ही वाला है. तो वो जो चेक है, वो चेक प्लीज यहां पर कर लेना इन योर रैपर फंक्शन. वो जो चेक है एम्प्टी लिस्ट का चेक, वो सिर्फ यहां पर कर लेना, सो दैट इवन दो योर लिस्ट इज एम्प्टी, इट शुड स्टिल वर्क. इट शुड स्टिल वर्क. I believe this is all right. Is it comfortable now? I'll just try to go ahead. I'll try to explain it once again and then I'll take a break. And then I will leave you in a break कि break में आप लोग खुद से एक बार करके देखो, बाद में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो we can again talk about. अब मैं एक मिनट कोड मैंने लिख लिया. Let me just explain how this code is working. कोड हमने लिख लिया है. Let us see that. वैसे तो कोड ज्यादा मुश्किल नहीं था. I guess code was simple. रिकर्शन के सारे कोड सिंपल होते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे होता है. सो वी कैन ट्राई टू विजुअलाइज बिट स्टेप बाय स्टेप. तो वी आर रिटर्निंग नोड, वी आर से रिकर्सिव रिवर्स, we are passing a node h to that. Oh, I understand this. And inside this base condition, if h dot next is equal to null, if h dot next is equal to null, what I'm saying, क्या करना है? The head should point to that particular node, head should point to that particular node, and I should return this, क्योंकि वही नोड हमारा लास्ट नोड है, तो उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. इज द फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकंड पार्ट, second thing, what is my recursive, the process to be explained in terms of itself.
process to be explained in terms of itself, I'm simply saying that it is a recursive reverse, reverse the rest of the list. Reverse the rest of the list. As you are reversing the rest of the list, whatever you are reversing, you just collect it in a, let's say, tail pointer, t pointer. जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में, लास्ट नोड के नेक्स्ट में करंट नोड को ऐड करो, लास्ट नोड के नेक्स्ट में करंट नोड को ऐड करो, एंड देन करंट नोड जो भी है उसका नेक्स्ट आप लोग नल कर सकते हो। और अभी ये जो आपका करंट नोड है, जैसे आप लोगों ने उसको टेल के नेक्स्ट में ऐड कर दिया है, आई बिलीव दैट द करंट नोड itself become now last node. Since it become a last node, why don't you return that? Why don't you return that? And that's it. This is what all the way code that you need to write it. So I guess it is very clear. This is what all we have written a code. Let us spend a little time and try to see how it is getting executed. Let me declare the node as well, node t. चलो अब इसको, ये कोड काम कैसे कर रहा है सर, एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, टू बी फ्रैंक ये ज्यादा मुश्किल है विजुअलाइज करना, बट स्टिल वी विल ट्राई टू विजुअलाइज एज मच एज वी कैन। सो यू स्टार्टेड विथ, हम लोग कहते हैं एच, ये पहले कॉल में आ रहा हूं मैं, इन फर्स्ट कॉल एच इज पॉइंटिंग टू 10, लेट्स से 20, लेट्स से 30, लेट्स से 40। अब जब फंक्शन के कॉल जाएंगे, हैव लुक एट दिस, मेन के अंदर से ऑलरेडी पहला फंक्शन को कॉल हो चुका है, रिकर्सिव रिवर्स, एंड इन रिकर्सिव रिवर्स व्हाट यू हैव पास, इफ यू हैव पास एड्रेस ऑफ 10, you agree? I'm just saying address of 10, I have passed it over there. Address of 10, I have passed it over there. So that address of 10 is nothing but h over there. And then from here you are going to the next call. What is your second call? Second call is again, ये पहले वाला condition false है, तो वापस से हम लोग वहां पर जा रहे हैं, and you are again making call to the recursive reverse, but now this time you are passing address of 20. You are passing address of 20. जो आपका second function call है उसका h, सेकेंड फंक्शन कॉल का जो h है इट इज पॉइंटिंग टू 20। फर्स्ट फंक्शन कॉल का h कहां पर पॉइंट कर रहा था, 10 के ऊपर, जो सेकेंड फंक्शन कॉल का जो h है दैट इज पॉइंटिंग टू 20। यू कंटिन्यू फर्दर एंड अगेन यू आर अगेन गोइंग टू रिकर्सिव कॉल, क्योंकि ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, आई एम वंस अगेन गोइंग टू रिकर्सिव कॉल, एंड अगेन यू आर सेइंग दैट रिकर्सिव रिवर्स, a recursive reverse as like address of the next node. So जब का थर्ड फंक्शन कॉल है, ए थर्ड फंक्शन के कॉल में h is pointing to this. प्लीज नोट दैट हर एक फंक्शन का खुद का फंक्शनलिटी रिकॉर्ड है जो स्टैक के ऊपर क्रिएट हो रहा है, डोंट फॉरगेट। सो h in the first one is pointing to this, h in a second one is pointing to this, h in a third one is pointing to this, don't forget that. I'm continuing further and you again रिकर्सिव रिवर्स, अब वापस से आप लोग कॉल कर रहे हो नेक्स्ट वाले को, इसका नेक्स्ट, दिस कंडीशन is still false, so you are again making call to the next recursive call, and next recursive call, so you are making for this recursive reverse with address of 40, and I can say that now this particular h is pointing to this. Chalo, so far it is good. And what is next job to be done? What is next job to be done? The next job to be done, नेक्स्ट जॉब टू बी डन, अब यहां पर आओ, ये चेक करो h next is equal to null, or condition is true now. If this condition is true, what you're saying, head is equal to h and then return h. Oh, I understand that head is equal to h and return h. When you say like that, please pay attention. Head is equal to h, so this is your global head pointer is pointing to this, okay, and then you are saying return h. जो आप लोग ने रिटर्न किया एच, वो आप लोग किस में कलेक्ट कर रहे हो, ये जो आप लोग रिटर्न कर रहे हो वो आप कलेक्ट किस में कर रहे हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग यू आर कलेक्टिंग इनटू द टी, एम आई करेक्ट? रिटर्न एच हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं टी के अंदर, यस वी हैव कलेक्टेड इन अ प्रीवियस कॉल, आई एम सेइंग दैट यहां से जो रिटर्न होगा, प्लीज पे अटेंशन, यहां से जो रिटर्न होगा इट विल रिटर्न बैक टू द अर्लियर कॉल एंड दैट वी आर कलेक्टिंग इनटू द टी, एम आई करेक्ट? आर यू देयर? सो यहाँ पर से जो रिटर्न हो रहा है इट इज कलेक्टेड इनटू द टी। प्लीज नोट दैट आपका जो लास्ट फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, your last function activation record is now destroyed, and since your last function activation record is destroyed, जो अर्लियर कॉल है उसका h यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये जो अर्लियर कॉल है उसका h यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज वेरी गुड। अब सर उस h के अंदर क्या हो रहा है, टेक अ लुक एट दिस, हम लोग कह रहे हैं t डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू h, प्लीज पे अटेंशन,
t dot next is equal to h. T dot next is equal to h. That is good. H dot next is equal to null. H dot next is equal to null. So you said this is null. This is no more pointing to this. This is null. Okay, that is good. And now what you're saying, you're again saying return h. Again you're saying return h. This return h, don't forget, will be again collected into the previous call. Again collected into the previous call. So what will happen? No problem. It is again I'm going back to the previous call. The current new functionality record, this is destroyed. Don't forget, sorry, सॉरी, ये जो टी था, ये हम लोगों ने लास्ट वाले नोड को कलेक्ट कर लिया, और जो आपका एच है, जो आपका लास्ट कॉल है, ये उसका एच आपको कहां पर पॉइंट कर रहा है? वो 20 के ऊपर पॉइंट कर रहा है. और दैट इज गोइंग गुड. एंड देन अगेन इन अ प्रीवियस कॉल you continue further, you say that t dot next is equal to h. A t dot next is equal to h. t का next ये मेरे को दिख रहा है. Yes, it is pointing to h. I see there. Next line h dot next is equal to null. H dot next is equal to null. It is null, so it is no more pointing to this. I see that. And then again you are saying return h. Again you are saying return h. जो return वापस से आप लोग यहाँ पर collect कर रहे हो, that is getting collected in like a previous call. Previous call is t, so you go back, you collect it in a previous call t, so it is collected over here. Obviously आप लोग return कर रहे हो, तो ये वाला फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है. इन अर्लियर फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, आई गेस h इज ओवर हेयर. ये आपने ऑलरेडी उसको रिटर्न कलेक्ट कर लिया है, आप लोग यहाँ पर हो. एंड देन अगेन यू कंटिन्यू द प्रोसेस. t डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू h. ए t डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू h, it is there. H dot next is equal to null. H dot next is equal to null. Now it is no more pointing to this. You continue further. Again you say return h. A return h. So again you are returning which you are not collecting anywhere. जो आपका wrapper function था उसके अंदर हम लोगों ने collect किया है. Hey, have a look at this. I'm talking about this. ये वाला जो call था यहाँ पर हम लोग उसको collect कर ही नहीं रहे. I guess code is over. And now you find that, oh, this is my linked list head. It's pointing to 40. 40 is next pointing to 30. 30 is next pointing to 20. 20 is next pointing to 10. And 10 is next pointing to null. Are you happy with this? I hope I explained the entire flow, how the execution is also done. But again, if you ask me, अगर आपको लिंक लिस्ट ये समझना है, आपको ये समझना नहीं चाहिए था, आपको ये समझना चाहिए था. So this is a different process. You build a code recursively, you think a process in terms of itself, and you think the base condition. तो उसके हिसाब से कोड लिखो. ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने पूरा रिकर्सिव करके दिखाया है. लेकिन अगर आपके पास 100 नोड होंगे तो आप लोग ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो start believing in a power of recursion and start believing in a recursive thought process, explaining a process in terms of itself. जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लीज नोट, ये कौन लोग पढ़ते पता है? ये वो लोग पढ़ते हैं जिनको रिकर्शन ठीक से नहीं आता है. आई रिपीट, जिनको रिकर्शन की पावर का अंदाजा नहीं है, वो लोग, उनको यकीन ही नहीं होता कि रिकर्शन काम करता है करके, तो वो उन लोगों की हमेशा जिद होती है, नहीं सर आप एक लाइन हर एक चीज करके दिखाओ. जब तक आपके दिमाग में ये रह रहा है कि नहीं सर आई एम स्टिल डाउटफुल कि ये हर एक कॉल, हर एक लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, यू टेक इट ग्रांटेड यू आर नॉट येट मास्टर ऑफ रिकर्शन. जिस दिन आप रिकर्शन के मास्टर बन जाओगे, यू नेवर बॉदर्ड अबाउट दिस. यू जस्ट से दैट सर एक्सप्लेन मी द टर्मिनेटिंग कंडीशन, explain me the recursive process, and now I believe कि rest of the job recursion will do it well. मैंने आपको बताया. सो जिन जिन लोगों को नहीं सर मुझको इसके बाद में समझ में आया है, इट मींस दैट आपको रिकर्शन का और प्रैक्टिस की जरूरत है. और ऐसे भी कुछ लोग हैं सर हमको इतना देने के बाद में भी समझ में नहीं आया है, देन यू प्लीज नोट, आपको अभी बहुत टाइम है. गो अहेड, कीप डूइंग प्रैक्टिस, थिंग्स विल सेटल सूनर और लेटर. चलो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं. एक लाइन एक्सप्लेन करना ये काफी मुश्किल काम है एक्चुअली. एच डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये लाइन हम लोग ने क्यों किया है? यू हैव सीन दैट एच डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग उसको नल नहीं करेंगे, यू गो बैक, यू कैन जस्ट गो बैक एंड यू जस्ट डिलीट दैट लाइन, एंड यू विल फाइंड दैट अगर आपने इसको नल नहीं किया,
Have a look at this. You see in any one process, Asavri, I'm repeating for you. अगर आपने इसको null नहीं किया, what is happening? This is still pointing to this. And if it is still pointing to this, what will happen? Actually, it will go 10's next is pointing to 20, and 20's next is again pointing to 10. 10's next is pointing to 20, and 20's next is again pointing to 10. So this way it is going in kind of an infinite recursion. वैसे वो recursion यहीं पर हो जाएगा. 40 का next is pointing to 30, and 30's next is pointing to 40. So this will become a kind of a loop, and it will keep stucking there. वो सिर्फ उतना ही प्रिंट करेगा, वो आगे कभी जाएगा ही नहीं. So it will never come back and point to this. Why that h dot next is equal to null is required? Because every time वो वाला जो नोड है, h नोड है, हम लोग उसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं. और हम लोग अभी नॉर्मली कौन से लिंक लिस्ट में, अभी हम लोग सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट में, लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होना चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ये लाइन मिस करते हो, व्हाट विल हैपन? It will just go in like an infinite loop. Your 30 40 30 40 30 40 is something that it will keep printing on. यहाँ पर अभी वो कुछ कर ही नहीं रहा है. So it is just gone there, you know, it is stuck into the linked list. अब वो वहीं पर आपके infinite loop में चला गया, right? And that is the reason I'm just saying that it should take care. I hope Asawari you got the point. सिंपल भाषा में ये जो h नोड है, करंट नोड है, हम उसको एंड में ऐड कर रहे हैं. अगर एंड में ऐड कर रहे हैं तो एंड के नोड का नेक्स्ट नल होना ही चाहिए. दैट सिंपल, दैट सिंपल, राइट? तो I'll just no problem, I'll just go ahead, I'll put on timer. Meanwhile you have any questions, let me know. और उसके बाद में हम लोग एक आध और क्वेश्चन लेंगे, and then we'll start with the stack, right? You're back. Good. So let's carry on. I hope by the time you should be comfortable in like reversing using recursion. As I said that it was a bit tricky, but that is still fine. You want to know, sir, हमको recursion करना है, तो you can. Okay, no problem. Wait for a minute. Let me have one more small problem, and this problem is bit different than the earlier one. Bit different than the earlier one, and this problem is not something I'm saying that reverse the linked list. No, I'm not talking about this. I do not want to reverse this. I have got a problem statement. Suppose that display singly list in reverse order. This is definitely the easier problem than the earlier one. Please understand that. But what I'm saying over here, display the singly list in a reverse order. यहाँ पर मुझको पहले नोड को लास्ट नोड और लास्ट नोड को फर्स्ट नोड नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. मुझको पहले नोड को लास्ट नोड या लास्ट नोड को फर्स्ट नोड नहीं करना है. आई वांट टू कीप द नोड्स एज इट इज, बट आई एम सेइंग दैट आई वांट टू डिस्प्ले इट इन द रिवर्स ऑर्डर. तो सर हाउ डू आई डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर? मींस रिक्वायरमेंट ओवर हियर इज दैट अभी क्या है, अभी हेड इज पॉइंटिंग टू 10, 10 इज पॉइंटिंग टू 20, 20 is pointing to 30, 30 is pointing to 40. I said that डिस्प्ले रिवर्स होने के बाद में भी लिंक लिस्ट ऐसे ही रहना है. मुझको लिंक लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करना है, लेकिन मुझको सिर्फ रिवर्स डिस्प्ले करना है. तो जो आउटपुट है वो आउटपुट 10 20 30 40 नहीं आना चाहिए, 40 30 20 10 आना चाहिए. इज द रिक्वायरमेंट क्लियर? इज द रिक्वायरमेंट क्लियर कि मुझको लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं करना है, मुझको सिर्फ रिवर्स डिस्प्ले करवाना है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. And now if you're talking about that, can you please tell me, can you put the problem in a recursive manner? Again, how it is executed ये मेरा question नहीं है. Can you try to put in like a recursive manner? अब इसको recursive, can you explain the problem in terms of itself? You want to display 10 20 30 40 but in reverse order. Can you explain the problem in terms of itself? I guess this is quite easy job. इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. So what I'm saying, no, Rohit, you are telling the solution. I'm just saying that if you are looking for that, what is the divide and conquer solution? You first display the rest of the linked list. First display the rest of the linked list and then display the current node. It display the rest of the linked list and then display the current node. So अगर आप इसको recursively consider करने की कोशिश कर रहे हो, all I'm saying that go ahead,
display display rest of the list. Obviously, after next node, you display the rest of the list, and then you go ahead, display current node. That's it. This is what all I'm saying. क्या इतना ही करना है, इतना ही करना है. But in this particular case, you need to understand कि आपका terminating condition क्या होगा. आपका terminating condition क्या होगा? Yes, I need to think of that as well. And if you are thinking of the terminating condition, again, as the beginner level, I'll do the paperwork once again. So let's say that this is 20, 30, 40 and this, let's say this is head. तो सर इसको डिस्प्ले करने के लिए you again continue, so that you display the rest of the list first and then you display this. I said then you display this. You continue further. What about this part? So let me first display 30, 40 h. तो इसको डिस्प्ले करने के लिए again the same, first you display this and then you display. Okay, you continue further. What about this linked list? What about this linked list? So I want to display this particular node. What I can do, I can again say, अगर आप लोग चाहो तो इसको टर्मिनेटिंग कंडीशन कंसीडर कर सकते हो और इसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1. और ऑप्शन नंबर 2, I can still say that display the rest of the list, display the rest of the list and then display this node, but the rest of the list कोई है ही नहीं. Oh, rest of the list कुछ है ही नहीं है. That can become my base condition. That can become my base condition, and if that is my base condition, I can just return back to the previous call, display 40. Then 40 print हो चुका है, I return back to the previous call, display 30. Then I can return back to the previous call, I can display 20, and then I return back to the 20 and then I can display 10. All these efforts that I can take it is quite easy. Let me just continue further and let me put it over there. All terminating condition, if list is empty, return. So that is nothing but my base condition, and this is nothing but the code. I can say reverse display. This is nothing but my reverse display code. That's it. Nothing extra that you need to do it. A reverse display का लॉजिक आपका क्या है? कुछ नहीं, ये आपका बेस कंडीशन है. पहले you write the base condition. If list is empty, just return. Otherwise, display the rest of the list. Means it is kind of a recursive call that you are giving. And after that, you just want to display the current node. So बची हुई लिंक लिस्ट प्रिंट होने के बाद में आपको करंट नोड प्रिंट करना है. That is what the power of recursion. That's it. Let us just go ahead and write it in a code. प्लीज नोट, यहाँ पर हम लोग लिंक लिस्ट को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ लिंक लिस्ट को रिवर्स डिस्प्ले कर रहे हैं. लेकिन मेरा इक्लिप्स कहाँ पर गया भाई? ये रहा मेरा लिंक. अरे इक्लिप्स हैंग हो गया है क्या? नहीं, हैंग नहीं हुआ है. इट इज देयर. सो एक रिवर्स का कोड था. हमें लिंक लिस्ट के नोड स्वैप नहीं करने, हमें पूरी की पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है. आई गेस स्वैपिंग से कोड हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, बट स्वैपिंग से हम लोग डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहे हैं. जब हमें कहना है कि लिंक लिस्ट रिवर्स करना है, सी देयर आर टू डिफरेंट प्रॉब्लम. लिंक लिस्ट रिवर्स करना है, सो वहां पर एक्सपेक्टेड होता है कि आप लोग उसके अंदर के पॉइंटर्स चेंज करो. इट इज एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप उसके अंदर के पॉइंटर्स चेंज करो जहां पर लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है. और जहां पर डिस्प्ले की बात आती है, रिवर्स डिस्प्ले करना है, एट दैट टाइम यू आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड टू मॉडिफाई एनीथिंग इनटू द लिंक लिस्ट. आपको लिंक लिस्ट में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना होता है, लिंक लिस्ट को वैसे ही रखना होता है, सिर्फ डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर में करना होता है. सो ना तो कोई स्वैप करना होता है, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना होता है. आई होप दैट इज क्लियर. अजानवी, yes, let me write. Oh, sorry. Return method display, reverse display. And what this method is all about, I need to write the main method. I mean recursive call का method पहले लिखते हैं quickly. Let me write a method for a recursive call. What is that? I need to pass the node and I can say h. I want to do that. What I need to do, I need to make a call to the recursive h dot next.
ए बचा हुआ लिंक लिस्ट प्रिंट कर लो. Yes, I'm doing that. And then you go ahead, you print क्या प्रिंट करना है हमें? करंट नोड का डेटा प्रिंट करना है. ओके गुड, आई हैव प्रिंटेड द डेटा ऑफ द करंट नोड. बट इसके लिए बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन इज दैट if h is equal to null, then probably there is no point in going ahead. I just want to return from here, so I return from there. Nothing much to be done. This is also taken care. Now you just make a call to the reverse display. You make a call to the reverse display from here, क्योंकि मुझको यहाँ पर हेड से शुरू करना पड़ेगा और हेड डायरेक्टली मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा बिकॉज इट इज प्राइवेट. सो आई जस्ट रिटर्न अ काइंड ऑफ अ रैपर फॉर दैट. और जस्ट ये मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंटिंग के लिए ये कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट प्रिंट अ लिंक लिस्ट ओवर हियर in a kind of a reverse order. So will it work? Let's try it. Let's try it. Reverse display, a return function, right click, run as, and there you find that a linked list is displayed in a reverse order. I repeat, linked list is displayed in reverse order. मेरा main linked list मैंने change नहीं किया. मेरा मेन लिंक लिस्ट जो नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन था वो अभी भी सही ऑर्डर ही प्रिंट कर रहा है. हमने एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये सिर्फ रिवर्स वाला डिस्प्ले था और कुछ भी नहीं था. हमने सिर्फ डिस्प्ले किया था, हमने लिंक लिस्ट को मैनिपुलेट नहीं किया था. प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट. I hope this code was quite easy after learning, mainly the recursive reverse. Was it easy? Hello? And why don't you then quickly try it, copy paste and run it? ऐसा हमेशा होता है, when you do the difficult things, you start appreciating the easy things. और आप लोगों ने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा. तो जब भी हम लोग we go to the next standard, we always say that the previous standard was simple. Right? And it usually happens like that. So as you do the more difficult algorithm, you realize अरे last वाला algorithm ज्यादा simple था. I'm waiting for you people to do it. Copy paste करो, run करो, see the output. Good. And if you are finished with that as well, there is the next problem that we have got in our hand. I'll take up this as a last problem and then we will move on to the stack queue kind of stuff instead of wasting more time onto the interview question. कभी खत्म नहीं होते. You can always keep going, keep finding new questions, keep preparing. And I would suggest that you go ahead, you try to do it by yourself. Talk to your friends, explain. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो better you explain them. That will help you practicing. वो जो skill होता है presentation skills, the presentation skills बहुत matter करते हैं. करेक्ट. अब प्रेजेंटेशन स्किल्स आर इंडिविजुअल्स, तो उसमें ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है. बट डेफिनेटली दैट इज अ रीजन वो जो ग्रुप डिस्कशन और काइंड ऑफ जो इवेंट्स अभी आज ऐड होंगे, सो यू विल रियलाइज दैट दोज इवेंट्स दे मे नॉट बी लाइक टेक्निकल इवेंट्स. They are not like kind of technical events, but then you get a first of all understanding कैमरा कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे पॉइंट्स मैनेज करने चाहिए, हाउ यू कैन टॉक फ्लुएंटली. that confidence is very important. So I'm very sure we are already planning these activities for you. I guess last week में नितिन सर ने आपको बताया. तो these activities will be continued because वैसे भी अभी आपका भी एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपका भी कैंपस नजदीक आ रहा है. और as I said that these things cannot be turned within one day. तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो सर एक काम करो हमारा एग्जाम खत्म होने दो, बाद में एक दिन कैंपस के पहले यू एक्सप्लेन अस व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन एंड देन वी विल डू द ग्रुप डिस्कशन ओवर देयर. ऐसा कभी नहीं होता है. ग्रुप डिस्कशन इज अगेन नॉट टू टॉट, इट इज टू बी प्रैक्टिस्ड. It is to be practiced. And that should come with like a self motivation. How yes, initial some tips and tricks are there. Yes, that can be always shared. That is not problem. Let us continue further. And we want to find out the middle of a singly linear linked list. What is the middle of a linear linked list? I'm saying that this is we have got like a head pointer. Head is pointing to 10. That is pointing to 20. It's pointing to 30. It's pointing to 40. And like a pointing to 50.
or this is what my linked list is, and I want to find out a midpoint. Can you just take a look at the diagram and tell me what is the middle in this diagram? By looking at the diagram, can you tell me what is the middle? Yes, the middle is 30. Now the middle is 30. That is something I want to find out. That is something I want to find out. वापिस एक बार. Don't ask the questions. Sir अगर हाँ exactly. Don't ask the question sir immediately. Sir वो अगर 6 नोड होंगे तो क्या होगा? पहले जो एक पॉइंट चल रहा है पहले एक पॉइंट खत्म करते हैं और उसके बाद में talk about the special cases. पहले जनरल केसेस खत्म करो एंड देन थिंक ऑफ द स्पेशल केसेस. तो जनरल केस क्या है कि मुझको बीच वाला नोड चाहिए. तो ऑप्शन क्या है? ये मेरे पास कुछ कपल ऑफ ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 ये है, आई कैन फर्स्ट ट्रैवर्स, आई कैन डू इट 2 टाइम्स. I'll say that approach number 1. Approach 1. Approach 1, I say that traverse list and count number of nodes. Number of nodes. Step number 1. And step number 2, again traverse till count by 2. Traverse till count by 2. Will it do? तो पहले आप लोग ट्रैवर्स करो 5 नोड और उसके बाद में 5 डिवाइडेड बाय 2, सो अप टू 2 नोड्स यू कैन ट्रैवर्स. विल इट वर्क? यस इट विल वर्क. आई लीव इट फॉर यू पीपल, क्योंकि मुझको लगता नहीं इसके अंदर कोई बहुत लॉजिक और कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है दैट यू पीपल कैन हैंडल. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड अप्रोच. द सेकंड अप्रोच, लेट्स से दैट द इंटरव्यूअर इज सेइंग मी दैट आई डू नॉट वांट टू ट्रैवर्स इट ट्वाइस. ये मुझको दो बार ट्रैवर्स नहीं करना है. आई वांट टू ट्रैवर्स इट ओनली वंस. नाउ हाउ डू आई डू इट? Now this is bit logical, and if this is bit logical, the approach that I follow is that something like this. We can have 2 pointers, or I say that take 2 pointers. 2 pointers. एक को हम लोग कहेंगे fast pointer और एक को हम लोग कहेंगे slow pointer. Okay, good. The fast pointer, so traverse, fast pointer. How do you traverse fast pointer? I'm simply saying that I want to jump to the next node, next to next node. So fast pointer हमेशा दो दो से इंक्रीमेंट करते जाओ. You increment fast pointer to twos, and जो आपका स्लो पॉइंटर है, उसको एक से इंक्रीमेंट करते जाओ. So how do I traverse slow pointer? I'm simply saying that जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेवर्स करते थे, स्लो डॉट नेक्स्ट. So what is the advantage? अब एक पॉइंटर आपका दो दो से जा रहा है, एक पॉइंटर आपका एक एक से जा रहा है. कॉमन सेंस है, जब आपका दो से जाने वाला पॉइंटर जब एंड में पहुंच जाएगा, तो आपका स्लो जाने वाला पॉइंटर बीच में रहेगा. आई होप यू कैन अप्रिशिएट दैट. इट्स अ कॉमन थिंग प्रोसेस. अगर आप लोगों ने एप्टीट्यूड में सॉल्व किया होगा, देयर आर टू बसेस गोइंग, one bus is going with the 80 kilometers, another bus is going with like a 40 kilometer speed, and if they have started, so within 1 hour, common sense is that अगर आपकी जो 80 किलोमीटर वाली बस है, अगर वो within 1 hour अगर वो 1 किलोमीटर जाती है, कॉमन सेंस है जो आपकी 40 किलोमीटर वाली जो 40 किलोमीटर पर आवर वाली बस है, वो आपको कहां पर जाएगी? वो ऊपर बीच में जाएगी. सो जिसका स्पीड कम होगा, सो दैट विल गो, सिंस द स्पीड इज हाफ, 1 hour में इसका जितना डिस्टेंस कवर होगा, दूसरे का उससे आधा डिस्टेंस कवर होगा. आई होप इट इज वेरी सिंपल, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट. अरे यू गॉट माई पॉइंट? सो देर आर टू पॉइंटर्स. एक पॉइंटर आप लोग दो दो से इंक्रीमेंट कर रहे हो, एक पॉइंटर हम लोग एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो जब दो से इंक्रीमेंट होने वाला पॉइंटर जब तक एंड में चला जाएगा, तो एक से इंक्रीमेंट होने वाला पॉइंटर ऑब्वियसली वो मिडल में रहेगा. इसमें और कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट. तो चलो लेट अस टेक 2 पॉइंटर्स. लेट्स ऐड ये जो बड़ा वाला पॉइंटर है, इसको हम लोग फास्ट वाला पॉइंटर कहते हैं, और एक जो छोटा वाला पॉइंटर है, इसको हम लोग स्लो वाला पॉइंटर कहते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इन ईच इटरेशन ये बड़ा वाला पॉइंटर नेक्स्ट टू नेक्स्ट के ऊपर लेके जाओ, बट इन द सेम इटरेशन इसको यहां पर लेके जाओ. फिर द नेक्स्ट वन, राजेंद्र मैंने यही कहा था कि पहले एक बेसिक केस खत्म होने दो, बाद में टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस. आई गेस आई टोल्ड इट वेरी क्लियरली. सो पहले नॉर्मल जाते हो, पहले एक खत्म तो करो यार, गो अहेड. बाद में वापस से जब इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेके जाओगे, आई एम वेरी श्योर इट रीच टू दिस. सो ऑब्वियसली बाय द टाइम दिस नोड रीच टू द एंड, बाय द टाइम ये जब लास्ट नोड के ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली दिस विल बी इन द मिडल. This will be in the middle. If you still not appreciate it, let us draw bit bigger diagram so that
You can appreciate it more. I said that 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ये बस बहुत हो गया. 80 मैंने जानबूझ के ऑड नंबर लिया है, सॉरी इवन नंबर लिया है, where there will be some issues, and we will try to find out what we can do into this as well. So again, I'll start with 2 pointers. I'll start with 2 pointers. Take a look at this. I'll start with 2 pointers and I'm saying that एक जो फास्ट वाला पॉइंटर है उसको 2 से इंक्रीमेंट करना है, जो स्लो वाला पॉइंटर है वो 1 से इंक्रीमेंट करना है. जब फास्ट वाला पॉइंटर है उसको 2 से इंक्रीमेंट करना है, जो स्लो वाला पॉइंटर है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है. जो फास्ट वाला पॉइंटर है उसको 2 से इंक्रीमेंट करना है, जो स्लो वाला पॉइंटर है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है. सी द प्रॉब्लम. जो फास्ट वाला पॉइंटर है उसको 2 से इंक्रीमेंट अगर मैं करूंगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा. सो अगेन आई विल पुट सम एक्स्ट्रा चेक कि अगर वो नल हो रहा है, अगर वो नल हो रहा है, देन आई विल स्टॉप देयर इटसेल्फ. I will stop there itself. And if you stop there itself, then still I find that this node is a middle node. Common sense is that this node will not be exact middle. अगर आपके पास even number of nodes है तो this node cannot be the exact middle. इसके left में 3 है और right में 4 है. Do you visualize this? That is still fine. Nothing much can be done. Only thing आपको सिर्फ ये condition check करना पड़ेगा. That is what extra I am saying. Nothing else. So आपको see, have a look at this. There are 2 conditions that you need to take care. One condition that you need to take care is that you are reaching to the last node. You are reaching to the last node that you need to take care, and you are reaching to the null. That is one more thing that you need to take care. Yes, absolutely, Jaideep. Whatever you are saying is correct. So ट्रैव या तो नल होता है तो रुक जाओ, या फिर ट्रैव का नेक्स्ट नल होता है तो रुक जाओ. These are 2 things that you can do. ट्रैव नहीं करना चाहिए, हमें फास्ट करना चाहिए. सो फास्ट जब नल होता है तब रुक जाओ, या फास्ट का नेक्स्ट जब नल होता है तब जाके रुक जाओ. दैट इज व्हाट ऑल वी नीड टू डू, एंड दैट विल फाइंड आउट द मिडल नोड फॉर अस. तो सर हाउ डू यू राइट इन अ कोड? और राइटिंग इन अ कोड इज वेरी सुपर सिंपल. यू नो, द फास्ट will start at head, slow will also start at head. Okay, very good. And then you say that while either fast is not equal to null, ये आपका even वाला कंडीशन चेक कर रहा है, या फिर नहीं, और नहीं, and fast dot next is not equal to null. A fast dot next is not equal to null. In both cases, just keep on traversing. How do you keep on traversing? Slow is equal to slow dot next, and fast is equal to fast dot next. Next dot next खत्म हो गया. So by the time the fast reach at the end, by the time fast reach at the end, I am very sure जो मेरा slow होगा, that slow is nothing but my middle. So slow's data is something that you want to return. That is the your middle node. Is this clear? Is logic is there? Okay, Rajendra, I hope you got the point this as well. So this is for handling your even nodes, even number of nodes, and this is for handling your odd number of nodes. So ये दोनों conditions हम लोग यहाँ पर consider कर लेंगे. That should not be a problem, right? मैं फिर से बता रहा हूँ, even node में 100% बीच वाला आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता. That is not technically possible. You people know that. So you get 40 or 50, both should be a valid choice. Should not be a trouble. Let's go back and implement it. Such a simple code it is. Public, 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 public. Integer. Set a find mid, or find mid, and finding a mid. Okay. What we have got? We have got fast is equal to head. We have got like a slow is equal to head. That is good. While fast is not equal to null, and fast dot head, sorry, fast dot next is not equal to null, not equal to null. Just let us take fast, faster, next to next. Every time fast is jumping by 2 and slow is jumping by 1, slow is equal to slow dot next. It is there. Simply say return slow dot data, and that is the middle node. And you can try it over here. 8, 10, 20, 30, 40. Let's say 50 भी add करते हैं,
And in this particular case, I want to find out which is a middle node. Okay, let's me try to print it. So I'm saying that like we have like a middle node. Middle node is equal to list dot find mid, or list dot find mid. I got this. Run as Java application, and you find that, oh, it is working. Go ahead, copy paste, run it, and clap for yourself. If anything is not clear, let me know. वैसे यहाँ पर clear ना होने वाला कुछ नहीं है. It's pretty simple code. It is in front of you. Can you give a try? Check if it is working.